Pragya, Yes, sir. Good evening, sir. good evening. Okay, introduce yourself. Sir, my name is Pragya Yadav. My hometown is Ghosi Mau. I have done my schooling from Central Academy, Jhusi, Prayagraj. I have done my BLLB from Faculty of Law, University of Allahabad in 2022. My father is an advocate. My mother is a homemaker. I am the youngest child in the family. I have two elder sisters, and my hobbies are reading books and watching web series and movies. Okay, so what is your favorable law in which you are more comfortable? Sir, I'll be comfortable in questions from Contract Act and Indian Evidence Act. Indian Evidence Act. Yes, sir. And what is the rule of inconsistency? Sir? What is the rule of inconsistency? Sorry, sir. When the facts are not relevant, is relevant otherwise. What does it mean? Thank you, sir. Sir, it is provided under Section 11, which says that facts not otherwise relevant or will become relevant if they are inconsistent with the fact in issue or relevant fact. So, in any other provisions of Indian Evidence Act which is mentioned like this? So, sorry, sir. Right now, I can't What is recall the it. power of the judges under the Section 165 of the Indian Evidence Act? What is the power of a judge? Sir, from what I can recall, it is related to that if any irrelevant questions are asked in the court, the judge has the power to inform the high court from. Yes, sir. Yes, go on. So by which that advocate is being governed, or that body in which he is enrolled. Anything else? And this is the power. Sorry, sir. Okay. What is the professional communication? Sir, professional communication is between advocate and his client, and it is protected under Indian Evidence Act from being disclosed. Professional can disclose the facts which is intimated by the clients to the professional. No, sir. If it is conveyed in the course of employment, it can't be disclosed in the court. And after the course of employment? No, sir. No. No, sir. Okay. What is the presumptio juris? Sir, presumption of law. And presumptio humanis? Sorry, sir. Okay. Section 28 of the Indian Contract Act. As we know that there is a if the any agreement which is restrained. Yes, sir. Is the void. Yes, sir. Whether this is given under the Section 28 of the Contract Act?
Sir, Section 28 of Indian Contract Act talks about any agreement which restrains a party from exercising his right to claim his to initiate any suit for any right. So Okay. that agreement will be void. So what are the exceptions? Sir, if there is clause provided in the agreement that if any issue arises between the parties, they will refer it to arbitral court. It will not be touched by the section. And also if there is any provision for referring the present issues to uh, arbitral court, it will also be not be touched by the section. Who can be witness? Sir, under section 118 of Indian Evidence Act, any person who is able to uh, understand the question and to give a logical answer to that question can be a witness. Again, repeat your answer. Sir, any person who can comprehend the question logically and give a logical answer to that question will be a witness. A lunatic can be a witness? Sir, if at the moment when the question is asked by him, if he is in the uh, sane state, then he can answer the question if he can comprehend the question properly. Automatism. What is sane automatism? Sorry, sir, I have no idea. Sane automatism? You have never heard this term in a No, law. sir. No, sir. Sorry, sir. Okay. The second one is a Indian Contract Act. Okay. So what is the necessity? Sir, necessity is under section 68 of Indian Contract Act. It says that if any person who is legally bound to provide a person for his life, and any other person provides for that person for his legal less necessities necessary for his life, that person will be reimbursed from the person's property to whom he has supplied those necessities. And what is a quantum merit? So quantum merit means it is the it says that that damages for the work done. No. Sorry, sir. Right now I can't recall it. Okay. Why you want to be a judge? Sir, I have always aspired to become judge because as I have already introduced myself, while introducing myself, I told that my father is an advocate. So I have always tried to be someone he can be proud, and I want to give back to the society what I have got from the people around me. So what would be the way? How you can return? So by uh, exercising my discharging my duties with honesty and utmost faith. And there are so any other ways in which you can return and you can serve for the society. Why specifically in a judiciary? Sir, because I always had interest in law, and also uh, it is one of those job that will keep me updated to the last day of my service, and I will be have to aware of my surroundings. I can't be in ignorance. Yes, sir. So what is the legal issues which is going on in your surroundings right now? Just uh, give me the 5 points.
Sir, Jan Vishwas Act, Manipur violence, same-sex marriage, the consenting age in POXO to increase that age, and also, sir, 370, abrogation of Article 370. So, what is the reason why there is a violence in a Manipur? Sir, the violence ensued after the High Court of Manipur ordered that the state government tried to include Meitei tribe in the ST list. And what is your opinion in case of marital rape, whether it should be criminalized or not? Sir, according to me, marital rape should be criminalized, because just because someone is married to someone doesn't give him the authority to dominate that person's will or consent. And a no will always be a no, whether that person is that spouse or anyone else. So, what would be the sanctity of the marriage that give to maintain the conjugal rights of a husband? Sir, if we don't criminalize the marital rape, then also we will be raising a question on the sanctity of a marriage, because in marriage there should be trust, there should be equal respect for each other. And if one person in the marriage is trying to dominate the other person, there is no such question of retaining or trying to save that marriage, because it is already finished inside, from inside. Yes, sir. So, what is the main object of the marriage? Sir, in Hindu law, marriage is a sacrament. Yes, sir. No, no, I'm just talking about the object of the marriage. Sir, the institution of marriage is necessary for begetting of child, to for the continuation of generation, for the continuation of family, and to uh, satisfy one's sexual desire. Yes, sir, in a legalized way. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. ओम प्रकाश जी, प्रज्ञा, Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। डाउरी डेट का प्रोविजन कहाँ है? Sir, 304B IPC. Okay, what are the provision? Sir, it says that if any married woman has died within the 7 years of marriage, and in unnatural circumstances, and soon before her marriage she was subjected to cruelty, it will raise a presumption that she has been it is a case of dowry death. प्रिजम्पशन किसके पर है? बर्डन ऑफ प्रूफ का? Sir, the person who will be accused of that dowry death. डाउरी डेथ में डेथ काज की जाती है? डेथ तो होती है ना वीमेंस की, वाइफ की। Yes, sir. तो क्यों नहीं इसको मर्डर में आपकी डेथ काज की गई है, इंटेंशनली काज की गई है, तो इसको मर्डर में क्यों नहीं रखा गया है? Sir, because the main reason to differentiate it from the murder was, though it is a murder, but here the relations between the accused person and victim is different, and the reason behind that killing is also very different and horrific. So that is why, though it is a murder in terms of law, but it is known as dowry death, because it generally it is in for the dowry that the killing लेकिन happens. 302 और 304 बी Yes, के sir. पनिशमेंट में तो
काफी फर्क है। वहां तो डेथ सेंटेंस काज की जा सकती है, यहाँ डेथ सेंटेंस नहीं है। वहां भी डेथ काज की गई है, यहाँ भी डेथ काज की गई है, ऐसा क्यों? लॉजिक क्या है इसके पीछे? Sir, because of the subsisting relation between the parties, it is a relation of confidence and trust, so that's why. कहीं ऐसा तो नहीं बर्डन ऑफ प्रूफ की वजह से रखा गया है कि यहाँ एक्यूज पे है और वहां प्रोसिक्यूशन पे है? Yes sir, it could be also a reason, because under section 113B of Indian Evidence Act, court presumes in the favor of the victim. ओके। Yes. प्रज्ञा, Yes sir. आपका लॉ में इंटरेस्ट किस फील्ड में है? Sir, Evidence Act and Contract Act. अच्छा, प्रोसिक्यूशन ने सारे एविडेंस अपने प्रोड्यूस कर दिए Okay sir. और उनके क्रॉस एग्जामिन भी हो गए, और आईओ ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें कोई ऐसा पर्सन है जिसका नाम नहीं है, और प्रोसिक्यूशन उस विटनेस को कॉल करना चाहती है, तो क्या करेगा प्रोसिक्यूटर? क्या उस जो चार्जशीट में नेम्ड विटनेस नहीं है उसको कोर्ट एज ए विटनेस कॉल कर सकती है? Yes sir, with the permission of the court, I think prosecution can call the any person who is not charged as such in the charge sheet. प्रोविजन कहाँ है? प्रोविजन Sorry sir, right now I can't recall it. 311 311 Oh, thank you sir. 311 पढ़ा है कभी? Yes sir, पढ़ा है. अच्छा, इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता सिमिलर पावर एविडेंस एक्ट में कोर्ट को दी गई, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, वो प्रोविजन एविडेंस एक्ट में कहां पे है? जिसमें कोर्ट को बहुत एग्जॉस्टिव पावर, ट्रूथ को सामने न आने के लिए कुछ भी कर सकते। Sorry sir. यूं कहिए कि एविडेंस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Sorry sir. 165 पढ़ा है? याद आया Yes आपको? sir. है Yes ऐसा कुछ sir. प्रोविजन इसमें? क्या है प्रोविजन इसमें? Sorry sir, right now I can't recall it. ओके। कंक्लूसिव प्रूफ Yes sir. डिफाइंड है एविडेंस एक्ट में? Yes sir. कहां पे है? Sir, section 4. है क्या ये कंक्लूसिव प्रूफ? Sir, it says that whenever it is uh, declared by the act that court for a conclusive proof, the court will not entertain any kind of proof to disprove that presumption. कोई इसका आप दृष्टांत देना चाहेंगे? एविडेंस एक्ट में है Section 112, which talks about legitimacy of the child. Section 113, which talks about the conclusive presumption for cessation of ओके duty. ओके ओके। क्या पीरियड है उसमें 112 में? Sir, 280 days after dissolution of marriage. सपोज Yes sir. ए की मैरी बी वुमेन्स होती है, Yes sir. और मैरिज के 2 महीने बाद ही वो मां बन जाती है, तो
तो इसका फादर कौन होगा? सर सर 2 महीने बाद कंसीव किया है या 2 महीने? नहीं, डिलीवर हो गया, डिलीवरी हो गई। ओके, कोई बात नहीं। सॉरी सर। आ, आ, ये लीडिंग क्वेश्चन यस सर। लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, चीफ एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते। क्या री यस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं? नो सर। कोई एक्सेप्शन इसका? Sir, it can be asked with the permission of the court if court is satisfied that the question relates to any undisputed or introductory fact or already established fact. Yes. राइट। एविडेंस के अलावा और किसी में आपका एविडेंस है कि सबसे ज्यादा आपको आप पसंद करती हैं? Sir, contract भी है और I will try to answer your questions from whichever subject you ask. तो ये अच्छा, एविडेंस क्या है? ये सब एसेंशियल लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है? Sir, it is a procedural law. ओके, क्या इसका कोई प्रोविजन सब एसेंशियल लॉ के नेचर का है? Sir, estoppel section 115. ओके, ठीक है, वेरी गुड। एविडेंस तो आपकी अच्छी तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट भी आप में दखल लगती हैं। Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेजेस हैं Yes, sir. उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट? वैसे चलता रहता है ये आवाज, बंद ही नहीं होता। Sir, कंपनसेशन का to पीछे का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनसेशन। sir, to somehow try to bring the disappointed party in situation in which he would have been if the act was performed. कोई एग्जाम्पलरी कंपनसेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में? सर, स्पेशल डैमेजेस के लिए है अगर पार्टीज को पता था, मतलब जो ब्रीच कर रही है जो पार्टी, अगर उसे पता था कि उस ब्रीच से स्पेशल डैमेजेस होंगे तो उसके लिए कॉम्पनसेशन स्पेशल डैमेजेस देने पड़ेंगे उसे। इसका लैंडमार्क डिसीजन क्या है? सर, हैडली वर्सेस बेक्सेंडेल। कब का है ये? Sorry sir, I can't recall the year properly. ओके, सत्यव्रत घोष वर्सेस sir. मंगनी राम, ये Yes, किस sir. थ्योरी से? Sir, it relates to impossibility of act. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। Thank you, sir. और एक कहा जाता है कि माइनर के बारे में कुछ कंफ्यूजन था कि उसका जो माइनर का जो एग्रीमेंट होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कहाँ जाएगा, वाइट होगा या वाइडेबल होगा। लेकिन एक केस ने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया, उस और लॉजिक भी थी उसके पीछे। आप बता पाएंगे? Sir, Mohari Bibi versus Dharmodas, in which court said that an agreement with minor will be void ab initio because he is not a competent person to contract under section 10 of the Indian Contract Act. केवल सेक्शन 10? Sir, 10 में 12, सर 11 भी आएगा उसका। क्यों 11 को 10 से कोरिलेट किया गया? सर क्योंकि उसमें क्या कहते हैं कि बताया गया है कि कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा, तो जो क्या कहते हैं कि नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है या फिर सेन पर्सन है, एज ऑफ मेजोरिटी है जिस वेरी पर्सन गुड की।
प्रज्ञा ठीक है, बस एक क्वेश्चन और बता दें आप कि क्या Yes, sir. इस माइनर के द्वारा या Yes, इस sir. माइनर के अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया जा सकता है? सर, लेस्ली वर्सेस शेल की केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर हम क्या कहते हैं कि रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो इनडायरेक्टली क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कराना ही हुआ, तो रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस। कोई एक्सेप्शन है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है माइनर के अगेंस्ट में फाइल किया जा सकता है? सॉरी सर, राइट नाउ आई कांट रिकॉल इट। ओके, लेकिन माइनर के द्वारा तो उसके बेनिफिट में तो किया जा सकता है ना? हाँ सर, 68 में भी है कि अगर उसे सप्लाई किया जा रहा है उसकी नेसेसिटीज फॉर लाइफ के लिए, तो उसकी प्रॉपर्टी से रीइंबर्स कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने अनजस्ट इनरिचमेंट यस सर। के थियरी के तहत कुछ पा लिया है, तो यस सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में उसको सेटिस्फाइड किया जा सकता है? सर, 70 में बात की गई है कि अगर बाय मिस्टेक या डिलीवरी कर दी गई है किसी चीज की, तो उसे मतलब कि री कॉम्पनसेट करना पड़ेगा अगर उसने यूज कर एक्सीलेंट, लिया। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, वेरी थैंक यू गुड। सर। ठीक है, और यह सर अब आप देख लें। या थैंक यू ओम प्रकाश जी। प्रज्ञा, मैं आपका बायोडाटा देख रहा था। गुड इवनिंग सर। यस सर। Good evening. Your biodata I was seeing. I have seen your two hobbies. यस सर। The one is the reading literary Hindi novels. Probably यस this सर। year. सर, Which रीडिंग बुक्स, एनी काइंड ऑफ बुक्स। okay, but you written the literary. Okay, anyway. Have you read any? Which book you read recently in last 1 month? सर, इकिगाई आई हैव रेड। Okay. Any other book? Sir, not recently, but I have read books, some thriller novels. Which thriller novel? Sir, the Tokyo Zodiac Murders of Soji Shimada. He's a Japanese writer. क्या लिखा है उसमें? Sir, the story is about the killing of 6 persons to create a body named Azoth. As it is said that every zodiac sign has a specific body. It is related to specific body part. So the killer in that book tried to create a body which had the lucky part of all the zodiac signs, and Very how the the investigator tried to investigate, and how it came out that there were only 5 bodies and 6 bodies were created, and the one of those person who everyone thought was killed was the killer actually. very nice. What message this book is giving? So it was a thriller novel, so I can't say there was a message, but we can say it was somehow related to counterfeiting, because the investigator got the idea that how the murderer would have killed was from a scam which happened, in which a real currency note was half torn out and stick with a counterfeit note to make a new note. Is there necessity of writing to give a message to society? Let's think. No, there's no hurry. Aram socho. My question is simple. I'm just explaining more the question. There is writings everywhere in the form Yes, of poems, the prose, the novels, the stories, the travel logs. You are interested in the reading of novel. Is there necessity of a novel to give a message to the society? no sir, it is not necessary.
A novel can be written without any purpose to give a message to society. Sir, we can say so because in like thriller novels, I don't think that there could be, a very exemplary lesson for society to learn, like we will have in any person's autobiography or lifestyle books. Yes, sir. Autobiography gives a message to the society. Sir, uh, a person get inspired by the person's life about which that book talks about. It is being said that most of the autobiographies are the false. The reason being, they give a very exalted picture of the person concerned. They do not write honestly. Are you agree with this statement? Sir, we are no one to judge the writer because that person is writing about himself. So we can't judge if that whole image he has created in the book is, distorted or not. Why we are no one to judge? I am a reader. I am buying a book. I have certain expectation from the book. Why I should not judge? It is Sir, my duty to judge. Sir, because we are no one to know the truth. Because we will not be able to know the truth about the writer, about what he is writing. We don't have any source to Means clarify the details provided. means Pragya, if you are not knowing any truth, then you will not try to know it. Sir, I will try to know, but there are some limitations about how much you can know about a person's life. Who is creating these limitations? Sorry, Give a sir. very give answer very easily. You are doing very well. Yes, I want to know more. I want to understand your personality more. Your law of knowledge is exceptional. I have seen the questions of the Anuj sir and the Omkar Jaswal. You are exceptional. I have no issue. I have no interest to select only. I have no interest to select a person as judge who knows only law. Law is very simple issue. Yes, sir. A judge is sitting on the chair. Two advocates are appearing. They will assist you. You can decide it. But for taking that decision, you need certain more issues. Yes, sir. What more issues you know? What more issues you need to have? What for a judge? Yes, sir. Besides law, what more you need to know? Sir, the working of society, the current issues, or the issues by which society is, more concerned, or yes, sir. You have said working of society, current issues, and third Sir, is the issues which society, which concerns society. Yes, sir. which concern society. Who will decide that this issue is concerned to society and this issue is not concerned to society? Who will decide this? Sir, I can also decide because I am also a part of the society. If you will decide, then you will not be prejudiced because everyone has certain biases in his personality. Sir, as our Honorable Chief Justice said that whenever a judge comes in court, he should keep his biases and ideologies apart. हाँ 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 या ओके ठीक है अच्छा ओके ठीक है हाँ हाँ तब तक ले रहा हूँ ओके ठीक हेलो सॉरी फोन आ गया था या Yes, sir. प्लीज रिपीट योर आंसर Sir, I was saying that as our Honorable Chief Justice of India said that whenever a judge enters the courtroom and sits on that chair on which he is going to do justice, he should keep his biases and ideologies
he should leave those biases at the door. So you will do this as a judge. Yes, sir. You said there is the judge need to have the knowledge or information of the current affairs. You said Yes. right now. No? Yes, sir. Explain me about the Manipur issue. Sir, the violence started mainly because of the order of the High Court, in which High Court said that state government should consider in you know and putting Mighty tribe in scheduled tribes list. Only this is the reason for the all violence or something else? Give me a bit Sir, more detail. It's a very simple issue. You are just saying that Supreme Court has passed an order saying that a state government should consider the Meitei tribe in the list of scheduled tribe. yes, sir. Explain me a bit more. It's not only issue. Sir, it started from this, but because Kuki people were saying that they are already influential in the politics and they are economically independent, so there is no need to put them in the scheduled tribes list, and that's how the violence started, and it took us such a horrific turn. Give me more information. By this entering in the scheduled tribe, what impact will be in the society? Sir, they will be able to get the benefits of scheduled tribes which government provides to any scheduled tribe member, like reservation and benefits in government schemes. It is a very simple answer that this fights only for reservation. Give me more information. Reservation is not only cause. You yourself told me just now the judge need to have a control over the current affairs. You said no? Yes, sir. And you do not have the control over current affairs. What I should do? I should select you or I should reject you? Sir, I will try to read more about the issue, but currently I have this much knowledge on the issue, sir. Yes. There is a issue going on the Common Civil Code. You must have heard Yes. this. Yes, sir. Common Civil Code has a certain relationship with religion. Yes? Yes or no? No, sir. Why not? Sir, because the whole idea of uniform civil code is based on the premises that in a civilized society there is a no relation between religion and personal laws. But it has the relation with the religion. By simply saying this, in a civilized society, there is no relation between religion and the, what you said, religion and the Personal laws. personal laws. By simply saying this, the issue of religion is emerging here. Just think this statement again. You accept it or not accept it. If you are putting the common civil code in the practice, you want to get away the personal laws of the respective religion. Yes or no? Yes, sir. Just think. But it's easy. Let's have a discussion. Let's have a talk. If you are Yes, sir. saying this, it means you are trying to interfere in the religion. Suppose common civil code has been passed. You are saying that you cannot follow the personal laws. Is it not an interference in the religion? Just go back to your No, old sir. statement. Yeah. No, sir, because by the uniform civil code, no rights or freedom of religion will be taken from the people. They will have. I got your point. Just Yes. listen me again. Yes. What I'm saying, you are interfering in the religion or not via common civil code. You can say I'm interfering in a positive way, but by passing the common civil code, there is interference in the religion or not? Yes, sir, there is. How India state may interfere in the religion? It's a slightly, Pragya, you are a very good candidate.
I don't want to ask very simple question from you Okay, sir. because I'm trying to select you. Let me take you towards some deeper issues Okay, sir. because I'm quite satisfied with your knowledge of law. I don't want to ask any question on the law. It's very unnecessary repetition what they have asked. And I will Okay, sir. reconfirm your knowledge of law. There is no issue. Let me take your analysis power. How an Indian state may interfere in religion? Sir, under Article 25, it says that Don't tell me the article. Come on the concept. I'm again repeating, Pragya. I'm very much interested to understand your analysis power. sir, state government has power to interfere whenever there is any issue related to public order or morality or public health चलिए or मैं आपको any fundamental rights. let me help you more. Yes. Indian state is strictly separate from the religion or not? No, sir. Very good. Then what is this? Sir, we have not adopted the Western concept of secularism, which says Okay. that state is, state is divorced from the religion. In India, I got it. Let me improve your sentence. What does it mean? A principal distance vis-a-vis the religion. Got me? What you are saying, yes. I'm just reframing in the better sentence. It is Thank a you, sir. principled is distance vis-a-vis the reason. Yes, sir. Religion. Okay. Now come on the question which I'm asking. How the state can interfere in the religion? Don't tell me the article. I'm again telling you. I know Article 25, I know Article 26. I just want to understand the concept. How the Indian state can interference in the religion, or you can frame this way, how the state can interfere in the religion. Because you have accepted that the Indian state is different from the Western countries and we can interfere in the religion. What are the guiding principles to interfere in the religion? Sir, fundamental rights, state can encroach. Let me again refine your answer. If I say the interference need to be based on the ideals laid out in the Constitution, it is better? Yes, sir. Thank you, sir. Why you are not able to recall this? One of my advice to you that don't try to see only the fundamentals. See one more. Second, why untouchability has been banned? Again, I'm reminding you, Pragya, I have tested knowledge. I didn't want to dissent the constitutional provisions. I want to understand your concept only. Why untouchability banned? Sir, because it negates the whole idea of equality which is provided in the Constitution. Anything more? Sir, to stop discrimination and to put all people on the same footing as humans. No religion, no caste, nothing. Can you search? You can search something more from the Constitution preamble. Just think. Sir, for justice and for equality. Yes. Or socho. Fraternity. Or socho. For unity and integrity of India. Dignity of individual. Yes, sir. Fraternity assuring the dignity of individual. Better word is fraternity or dignity of individual? Sir, the word is fraternity assuring the dignity of individual and unity and integrity of country. This is the whole concept for the untouchability. You got it? Sir. Yes, sir. Thank you, sir. Any confusion? No, sir. Thank you, sir.
Give him a two, three more information to me. I just want information to you. I'm again reminding you, I have no interest in your law knowledge. It has been tested. I'm again repeating again, because I Okay, want sir. to understand your else's power and your way how you can understand it. Rest of thing is very simple. In the emergency provision, in one of the provision, impact of the imposition of emergency, 2 ground has been used, in one the 3 ground has been used. Yes, sir. Can you recall this? Yes, sir. Recall, please. Right. Sir, Article 358 says that in case of national emergency imposed on the ground of war and external aggression, Article 19 will be automatically suspended. However, Article 359 says that in all the 3 grounds, that is war, external aggression, and armed rebellion, uh, order of president will be needed to suspend all rights except Article 20 and 21 in the Constitution. Very good. Something more want to say? No, sir. There's one provision in the Constitution where the salary and allowances of the judges can be adversely impacted by the Parliament. Yes, sir. Which one? Which one? Sir, Article 360, which talks about financial emergency. You have just said Pragya, some of the issues about the judge, why you want to become judge. Yes, sir. I'm not very much convinced your answer. Please reframe the answer again. One of the answer you have given, let me help you more. One Okay, answer you said, ki, my father is an advocate. Yes, sir. How becoming your father an advocate helping you to become a judge? Sir, because there was always a environment around me relating to law, and which was main reason for my inclination towards the law, and for becoming, as a child, I If your always father, had. I got your point. If your father has been in the police service, Yes, would sir. have preferred you would have preferred to police service? No, sir, because it includes my interest also. If all I your have father, if your father has been thief, you have to go for that? No, sir. I'm saying that I also had the interest in law. That's why I pursued to be a judge. Why you said me, my father is an advocate? You said this answer. I have interest in the law. Sir, because he was the main reason for my interest in law. You want to give something back to the society. One of the reason you said. Yes, sir. What do you want to give back to society? Sir, to provide them with justice, and to somehow help them in affirming their faith in the judiciary. It is being said that no one can get the justice unless you have money. You have heard this. Yes, sir. How you can give the justice? Only the people will approach you. You can decide those cases. Only the rich people are opposed it. Where is the common man getting justice? How you can give the justice to common man? Sir, in any crime, whichever happens in the society, state is also the party, and state has this duty to provide legal aid to any victim. So yes, sir, I think that in any such situation, state will come to the rescue of that victim, and that victim will be present before me so that I could give him justice. Only the person who can present before you can give the justice. It's a very limited responsibility you are going to fulfill. What is big social responsibility in this? Suppose you have got the 100 cases in 1 month to decide, for example. Yes, Out sir. of 100 cases, 90 cases are for the person who can afford to reach the court. 80 cases. And the rest of the 20 cases are not coming before you because adjournment, this issue, that issue. How you provide the justice to the society, to the masses? Have you any plan in your mind?
There are two sets. One set is the person who's opposed to you. Second person not opposed to you. Who has not opposed to you, you have no jurisdiction. The person who's opposed to you, only those cases being decided in which there is influential advocates, they are able to handle situation better way. How you are going to help to the society in the big way by this when the process goes? How you improve this process, this whole mechanism? Sir, by following the law and to doing my best, which I could do in that present situation, because I will be in the privileged situation to touch upon those issues which are affecting the society. You have said one of the answer that the institution of marriage Yes, sir. is for the sexual pleasure. Sir, it is one of the reasons. Where you read this? Sir, begetting child to satisfying one's sexual desire in a legitimate way, these are the reasons for institution of marriage. It means the person who is not in the institution of marriage, but going for this sexual intercourse, it is a crime. Yes, sir. कहाँ लिखा है? Very soon. It means live-in relationship which is in the society. It is a crime. Sir, Yes, sir, yes. right now, a Supreme Court has said that live-in relationship will have the recognition or somehow resemblance of the marriage, because it perceives to be so, like in marriage. But the real reason is the legitimacy of that relation. You are not changing your stand? No, sir. But live-in relationship is not a marriage. Yes, sir. It is not a marriage. They also have the pleasure. Then why it is then when it is not illegal, Supreme Court itself has said that. Then where is this domain is coming that the marriage is required for having a sexual pleasure? Supreme Court could have said that, na? You want to have sex, you go for the marriage. तो कहा नहीं उन्होंने. They said कि live-in relationship as good as marriage. They have said, and in live-in relationship you have both the partner has the freedom to leave and go. Yes, sir. Marriage no precondition. Yes, sir. Yeah. Sir, because that live-in relationship for that time when it is subsisting, it gives a color of marriage. That's why they are having that recognition. What is your idea about your marriage? When you want to marry? Sir, right now I have no such thought of marrying. But you must have thought for your future husband. No, sir. It's not a very practical answer. Any person Sir, who has... because I am the youngest child and my elder sisters are still unmarried. So Okay. I don't have that. Let me, you answer me. Which type of husband you want? Sir, I never thought about it. Actually, I never thought about it. It's fine. Okay. Yeah. Sorry. Sir, pranam, sir. Which kind of husband do you like for your sister? The eldest one. Sir, with whom she will be happy. The least requirement is that. Right. And this is a very abstract thing, obviously. We are only deliberating. I am not asking you to give any concrete answers. But what qualities one should look for in a person if we are choosing to be with him or her for a lifetime? So, firstly, he should recognize my freedom and that space in any relationship. The respect, and foremost thing that since we are three sisters only, I think he will have to treat my family as he treats his family. Yes, sir, equally. Very well. Very well. So that is one, fairness. Yes, There sir. should be a sense of mutual respect for freedom and fairness.
Yes, sir. Anything else? Sir, no dowry. No doubt, absolutely, absolutely right. Okay, fine. Tell me, what is the representation of women in Indian judiciary right now? Sir, I don't have, proper knowledge about the statistical data. Yes, sir. Just a reasonable guess if you were to make. Sir, there are, efforts to increase the representation and Acha, let us go a little on a little tangent. Have you seen the picturization of a court in cinema, yes, sir. the movies and all? Yes, we must have come across. How many times have you seen a woman judge? Sir, hardly 1 or 2 times. Isn't Hardly. it? So, isn't it still dismal? So Yes. the representation of women is still far less than required. Okay, all Yes. right. How do you think the quality of, or what effect would it have if representation of women as judges increases? Sir, because women will be, it will bring a new perspective to the bench. They will be the one who can share their experiences and their point of view. Is it permissible to use your own experiences and special knowledge in judgment? Sir, those experiences will somehow help in delivering the judgment. Should that be allowed? I mean, as per prudence, should a judge be allowed to smuggle his or her own experiences and prejudices into the decision-making process? No, sir, but it will, bring the inclusivity of perspective That's in the bench. absolutely right. That I agree, absolutely. Inclusivity and diversity of perspective, that one point I absolutely agree. But Yes, this sir. experiential wisdom somehow has what we call a second facet also, isn't it? That can go wrong also sometimes. Okay, we can, for instance, I mean, we cannot, for instance, let us take a very hypothetical and unfortunate incident. For instance, if someone, an honorable lady judge, was subjected to some sort of unnecessary harassment or molestation in her lifetime, God forbid, if she is entrusted with judging a case like that, then there may be a case of personal prejudice against the accused, isn't it? So that's Yes, a sir. possibility. So in any case, it is not advisable for my, in my view, it is not advisable to look for a judge, look up to a judge for her or his own experiential wisdom to be smuggled into the order or decision taking. But perspective point is absolutely Yes, right. sir. And do you also not think that in a courtroom, a woman judge sitting in that chair, that itself is symbolically so powerful that yes, justice is done in this country. If you have it, you will get it, isn't it? Yes, sir. In a system where representation of women is dismal, still, if some woman is able to make it Sir, up to the chair because it of will be sheer a ray merit, of hope for every woman. isn't Yes, sir. it? That itself Yes. symbolically establishes that yes, this is a system which actually delivers justice, Yes, sir. not only outside the court, inside the court, and in the process of becoming a court. So that's a very powerful statement. Okay, that's fine. Okay, let me ask you something about Constitution of India. Do you see how many fundamental rights are enforceable even against private citizen? Sir, recently in case of Kaushal Kishore versus State of UP, Supreme Court said that Article 19 can be enforced against private person. Okay, okay. And what is the difference between a fundamental right, a constitutional right, and a statutory right? Sir, fundamental right is the because of the very essence of being a human being. Constitutional right is any right apart from the fundamental right, like right to property. It is a constitutional right, but a statutory right is provided in the law and not in constitution. Is constitution not a statute? Sir, it is the
source of every law, we can say. It is the grand norm for every law. But constitution by itself is not a statute. Is that your position? So sorry, sir. I can't answer. I All can't right. recall. No problem. No problem. No problem. Do you think live-in relationship is morally wrong in Indian fabric? Sir, since our society is not that much advanced or liberal, yeah, there are still people who think that it is against the cultural and culture of India and cultural values of India. Yes. And how do you say it is not that much advanced? Advancement means? Sir, because we still value those traditional values and our culture. For us, marriage is a sacrament, and any relation like that marriage, but not being a marriage, for Indian society is still a tough job to recognize such a thing. All right. All right. Do you think there should be or is some law for protection of senior citizens, their Yes, social sir. security? Is there a law in this country? Yes, sir. Yes, sir. Tell me about it. So maintenance and welfare of senior citizen, it provides that any senior citizen who is childless or has a child, so that child is bound to maintain that senior citizen. All right. All right. Have you heard about the phrase unintended consequences while studying law? No, sir. Have Sorry, you sir. heard about the term literal interpretation? Yes, sir. Can literal interpretation lead to unintended consequences? Yes, sir. Sometimes it could. That is the, isn't it? Unintended consequence are the very basis why someone has to depart from literal interpretation and go into reasonable Purposive interpretation or purposive yes. interpretation, isn't it? Yes, sir. Can you give any one example from the whole of law where literal interpretation can lead to such an unintended consequence? Take Sir, your time. as provided in Motor Vehicle Act, that if a person has committed accident by mistake, he will have to stop. And let's say if a person does an accident, stop for 2-3 seconds and then runs away, it will lead to the failure of the law, because here if we go with the literal interpretation, it will it will make the purpose of law infructuous. Yes, sir. But this is absurdity of law, not unintended consequence. This is absurdity. There are 4 or 5 things because of which we have to depart from literal interpretation. 1, ambiguity. 2nd, absurdity. 3rd, unintended consequence. Isn't it? These are 4 or 5 distinct situations. Do you remember that a law, some example that was interpreted to lead to something which we never imagined, that this will be an added consequence, which was not ever imagined? Sir, there have been allegations that section 498A of IPC was used to harass the other party, the family of spouse and the spouse husband. That is misuse of law. Okay, fine, we'll move on. Habeas corpus case you have heard? Yes, sir. Was that a good judgment? Sir, which case? I know habeas corpus. Case? ADM Jabalpur? Yes, sir. Sorry. No problem. Sometimes it happens. So, was Supreme Court correct in giving that decision? Yes, the court said that even during the period of emergency, one cannot be debarred from moving court to exercise his fundamental right. Yes, sir. That was precisely what the court should have given. Judgment was absolutely opposite, wasn't it? Sorry, sir. Right now, I can't recall the fact. You must know this particular case is very important. You are there, Sorry. but you misunderstood it. It is the other way around, and that is why precisely why it is criticized.
And honorable Supreme Court themselves, they have said it openly, recorded it openly, that we were wrong perhaps at that time. So that's how the minority judgment, we have discussed it. You must listen to yesterday's or day before yesterday's mock, somewhere this was discussed. So that is one. Okay. So what value are you going to make as a judge to judiciary? What value would you add? Sir, free from biases and to deliver justice at any cost without any influence or any. Yes, sir. Okay. What would you say if I say that in this panel, right since the morning or say afternoon, people people have been saying the same thing actually, what you just said. What would be your take upon that? They are saying the same thing. Then how should we be able to delineate you from others? Sir, though these things could sound cliche, but I think any person who is present before this panel and going to be a judge, he should bring these qualities to the court. Okay, but the question is, how do we delineate you from others? Why you should be selected over others if all of you are saying the same thing in response to such a question? Sir, I have faith on your decision, and all I can say is I will try to prove myself. Yes, sir. Give me one example where, to the best of your abilities, you have already tried to help people. Sir, At right. any scale, at any scale. Sir, I tried to help my neighbor because her son was beaten by some people, some school going people, and they intimidated him that if you go to the police, we will do such and such and thing. We know your house. So I tried my best to convince her that go to the police, they will help you. If you delay this thing, it may backfire to you, because as you are saying that they know your house, you have a daughter, you have a whole family, it could backfire you if you delay this. Yes, sir, I've tried my best. Okay. Last question from my side. You must have, obviously, being from that culture, you are aware of the basic storyline of Ramayana, isn't it? Yes. So, which sections of current law would have been applicable on Marich, Ravan, and Meghnad for what they did? Sir, Ravan abduction. All right. Sorry, sir, I'm not that much well versed with Ramayana. What did Marich do? Sir, I don't know exactly. My goodness, then that is a pity. That's a pity. If you do not know that, that's not forgivable. Sir, यार मैं समझ नहीं आ रहा प्रज्ञा, मैं क्या बोलूं इसमें। सर, मेरे फैमिली में उतना कुछ मतलब रिलीजन को लेके है अरे नहीं, तो मतलब रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं। देखो, मैं इस इंटरव्यू का बेस्ट सवाल इसको ट्रीट करूंगा। रामायण आपने पढ़ा है, मारीच, मेघनाथ और कहते हैं रावण ने अपहरण किया है, आप क्या करोगे? इसमें आपकी एक संस्कार पकड़ा जा रहा है, आपका भारतीय मित्रों के बारे में ज्ञान देखा जा रहा है, फिर आपका विश्लेषण देखा जा रहा है, आपका एप्लीकेशन ऑफ लॉ देखा जा रहा है। आपने एब्डक्शन बोल दिया, अगर आप एब्डक्शन में तीनों को लगा दे तो भी आपका काम हो जाता। भाई अपहरण, एब्डक्शन और अबेटमेंट दोनों लगा देते आपका काम हो जाता। मेरे ख्याल शौर्य तब उसमें और कुछ पूछते, लेकिन आप एक प्राइम ऑफ ऐसा ही आंसर तो दे गए थे ना आप।
मारीच रिस्पॉन्सिबल थे अपहरण में, मेघनाद रिस्पॉन्सिबल थे अपहरण में। क्यों? अपहरण करने के बाद जब सीता जी वहां रही तो सपोर्ट कर रहा था। रावण ने चीटिंग भी की, अब्डक्शन भी किया। अगर आप Yes. एब्डक्शन और अबेटमेंट दो चार्ज के बारे में बोल देते तो शायद आपने काफी आंसर कर दिया था। आई डोंट नो शौर के आंसर चाह रहे थे, लेकिन नहीं सर, बिल्कुल सही सर। हाँ, हो गया। आपने एक फुल टॉस को ऐसा अब अगर मैं इसको लास्ट क्वेश्चन मानूं इंटरव्यू बोर्ड का, तो आपने सिलेक्शन को अपने आप डाइल्यूट किया। सिलेक्शन इसके बाद भी हो सकता है, लेकिन आपने सिलेक्शन को डाइल्यूट कर दिया बिना मतलब में। और फिर आपने जब ये बोल दिया कि सर मुझको नहीं पता है भारतीय इतिहास के बारे में, कोई हिंदू लड़का लड़की, कोई मुसलमान ही हो, कोई हो यार। सर मुझे एब्स्ट्रैक्ट मतलब इन जनरल स्टोरी पता है, बट कैरेक्टर वाइज मुझे बहुत अच्छे से नहीं अरे पता बेटा, ये जनरल स्टोरी है, इसमें कोई एनालिसिस की बात ही नहीं है। सीता जी का अपहरण हुआ, मारीच ने वेश बदला, रावण लेके गया, मेघनाथ सपोर्ट कर रहा था। इसमें कौन सा? तो टेल मी व्हाट मोर इंफॉर्मेशन यू वांटेड इन दिस, टेल मी। इसमें कोई किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जो हम लोग कक्षा 2, 3, 4 में रामायण कहानी कोशिश काम हो गया था। लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस पार्ट। 3 शब्द में हो जाता बेटा, जस्ट टू टेल यू। Sorry. अबेटमेंट, abduction, wrongful confinement. If I am right, Anuj sir would be able to finally approve it, whether we are. सर डिस्गाइज बाय पर्सोनेशन, हाँ सर 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 बताएं। डिस्गाइज बाय पर्सोनेशन बोलना था बेटा। जबरदस्त। वो भी सॉरी सर। भेष बदला है उन्होंने। पहली बात, प्रज्ञा आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा दिया, बहुत ही अच्छा दिया, नो डाउट अबाउट इट। एंड इफ आई कंपेयर योर लास्ट इंटरव्यू दिस इंटरव्यू, आई विल से वेरी 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 सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। मेरी एक फिलॉसफी है कि कम बच्चों को लेना और सबको रिपीट करना। हम और लगातार डिस्कस ही करते रहते हैं इस बात को। पहले इति भी करती थी, आजकल वो बस समय कम रहता है कि किसी भी बच्चे का 2 इंटरव्यू होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यस सर। लेकिन 2 इंटरव्यू उसी बच्चे का हो जो बच्चा बहुत सिंसियर हो, इज अंडर कंडीशन। आई हैव a lot of grievances with most of you. Why? Because you listen only over your interview, why not others? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आप सबके साथ। दूसरी बात, हम आते हैं आपके इंटरव्यू। देखो प्रज्ञा, आपके लॉ ऑफ नॉलेज में मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा नॉलेज है। आपने सॉरी बोलने में आप समय लेते हो, अब समय मत लो। आप अगर हम सारे सॉरी का टाइम जोड़ें तो ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट आपने लूज कर दिया। कि आपने नहीं आता, बोल दो यार, तो लो ना। ओके। जब सॉरी बोलते हो चेहरे पे कोई अपॉलोजेटिक भाव नहीं आना चाहिए। सॉरी सॉरी नहीं आता, नहीं आता, तो आप चेहरे पे अपॉलोजेटिक भाव मत ले आओ। नो सर, I think that it shouldn't come across like I'm being shameless, that's why. नहीं नहीं, नॉट शेमलेस। थोड़ा क्या है, एकदम गंभीरता से, एक पूरे सदाशयता से, पूरे तमीज से बोलो सॉरी सर, आई एम नॉट डूइंग। ओके सर। आप जज क्यों बनना चाहते हो, इसको हम लोग इतना डिस्कस कर चुके हैं कि गलती क्यों हो रही है। वाई अननेसेसरी ये आर पोजिंग, मेरे पापा ये करते हैं, माता ये, कैसे, क्या मतलब है यार। देखो क्या है, ये कह कि आप सवाल बढ़ा रहे हो। By saying that my father is an advocate or my father is a judge, so I want to become a judge. What does it mean? It means you wanted to say that कि हमारे पापा और मम्मी का जो विचार है हम पे प्रभावी हो रहा है। प्रभावी होता भी, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपके पापा चोर होते तो, आप पापा ये होते तो, ये आपकी पर्सनालिटी को डाइल्यूट करा। वी हैव डिस्कस अ लॉट अर्लियर आल्सो कि आप ऐसी चीजों को थोड़ा अवॉइड करिए। चैलेंज है, सोसाइटी में हम काम करते हैं। ये इशू, जैसे शौर ने एक चीज पर रोका था कि आप जॉब सिक्योरिटी की बात मत करें, ठीक बात बिल्कुल ना करें। आप सोसाइटी में हम चेंज लाना चाहते हैं, हम सोसाइटी में परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं। आप महिला हैं, आप पास एसेट है, महिला है, लोअर मिडिल क्लास की हैं, स्मॉल टाउन की हैं, इसको हाईलाइट करें आप। आई हैव इंटरेस्ट इन लॉ, ठीक बात है। इट इज वन ऑफ द जॉब which keep me updated last day of my service, and ये भी अच्छी बात है। लास्ट ऑफ सर्विस आपको तो थ्रू आउट माई लाइफ मैं टीचिंग करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, उसमें हेल्प करेगा।
अब आपने एक क्या बोल दिया जर्मनी कि हमको करंट अफेयर आपको बिल्कुल नहीं आता है। जो मणिपुर की क्राइसिस है उसमें रिजर्वेशन इज वेरी वेरी स्मॉल पार्ट। इशू क्या है, कुकी और माइती में एक हिल्स पे है, एक वैली में है, सारी लैंड हिल्स पे है। यस सर। मैती वैली में है, मैती लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। उन हिल्स पर अफीम की खेती होती है। सारा पैसा, झगड़ा क्या है, जमीन का है। इट इज वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन। इफ यू से दे आर फॉर दिस रिजर्वेशन, they will conclude that you have no understanding of the current affairs. The day you all joined here, I said you start reading newspaper. आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। जब से आप लोग मेरे साथ हो, कम से 3-4 बार न्यूज़पेपर में आ चुका है ये। तो जरा उसमें बेटा आप ठीक करो। सर आई ट्राई टू एब्सटेन बिकॉज ऐसा ना लगे कि आई एम गेटिंग एक्सट्रीम विद माय थॉट्स कि उनको ऐसा लगे कि मतलब कि नहीं, यू आर स्टेटिंग फैक्ट्स। जो मैंने कहा है तो फैक्ट है ना यार इसमें। यस ये रिकॉर्डेड फैक्ट, इसमें कुछ ऐसी खास बात भी नहीं है। ये लॉ है। अगर एसटी का स्टेटस मैटी को मिलेगा तो मैटी भी वो वो जमीन लैंड खरीद पे, सकेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो लैंड ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो इसमें हाँ। फैक्ट है, इसमें व्यू पॉइंट कहाँ से आ गया। मैरिटल रेप पे आपका ठीक था कि हम क्रिमिनलाइज करें ना करें। एक जो आपने बोला था कि हस्बैंड वाइफ में डोमिनेट करते हैं, आई हैव अ सर्टेन रिजर्वेशन। डोमिनेशन को आप थोड़ा अवॉइड करना। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज, आपका आंसर ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था आपका आंसर। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज क्या है, आपका सेक्सुअल प्लेजर, यही नहीं है। मेन नहीं सर, वन ऑफ द रीजन है, जैसे बिगेटिंग ऑफ चाइल्ड, कंटिन्यूएशन ऑफ देखिए क्या है, फैमिली। ये कि बेटा इसी पे काउंटर हो जाएगा जो सोसाइटी चेंज हो चुकी है। बड़े शहरों में, पाश्चात्य देशों में, बड़े महानगरों में जो लिव इन रिलेशनशिप है वो बहुत ही आम हो चुकी है, बहुत आम हो चुकी है। नए जो समीकरण उत्पन्न हो रहे हैं, लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं, लिव इन चाह रहे हैं। इट इज नॉट ओनली फॉर बॉयज, गर्ल्स ऑल्सो। उसमें फायदा क्या है, उसका मतलब एडवांटेज क्या है, यू कैन वॉक अवे एट एनी डे। शादी में वॉक नहीं कर सकते हो ना। तो यस अगर आप सेक्सुअल प्लेजर का आपने उसमें सेंटेंस यूज किया तो ये सवाल आएगा ही आएगा। आप इस सवाल से बच नहीं पाओगे। फिर आप अपने को डिफेंड नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू योरसेल्फ हैज सेड दैट दिस इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बोल देंगे कि आप ही तो खुद ही कह रहे हो। आपका लाइन था, सेटिस्फाई वन सेक्सुअल डिजायर इन लीगलाइज्ड वे, इफ आई यस सर। where it is written that the living relationship is illegal is nowhere written. Consenting partner go for the sex, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा होगा, आपने पढ़ा है। अब तो नया आया है कि अगर, अब आपने अभी हाल मैंने पेपर में पढ़ा है कि अगर किसी कमरे में एक लड़के लड़की को साथ पाया जाता है, आप कोई केस नहीं कर सकते हो। यू आल्सो मस्ट रेड दिस। यस सर। तो आपका जो एक ये लाइन था कि सेटिस्फाई वंस 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 क्या करना है, जाओ जस्ट मिनट, सॉरी जस्ट वन मिनट। तो आपको कहना था कि सेटिस्फाई वंस डिजायर लीगलाइज वे, इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ही आपका गलत हो गया। ओके सर। आप जस्ट यू थिंक अबाउट दिस भाई, क्या अपना पर्पस है, आप मिस्टेक वहां पे हाल में मत कर दो। अब आपने ये नहीं जोड़ा कि शादियों की जरूरत क्यों होती है, सब समाज की व्यवस्था की स्थापना, समाज के नियमन की स्थापना है, माता पिता का टेक केयर करना है। ग्रैंडफादर की टेक केयर बच्चे ही करते हैं ना, 80 साल में कौन केयर करता है। जो मैरिज की स्थापना, वो इंस्टीट्यूशन सिर्फ संतान उत्पन्न करने या सेक्सुअल डिजायर तक ही सीमित नहीं है, उसका एक रादर लार्जर इम्प्लीकेशन है। एक भावनात्मक संबंध, आपका और मेरा संबंध विकसित कैसे हो रहा है, हम आपके साथ रह रहे हैं 25 दिन से, ठीक है ना। तो आप मुझको पिता पुत्री के संबंध में देखें, मित्र के संबंध, जिस संबंध में आप देखें, मेंटर और स्टूडेंट संबंध में देखें, विकसित क्यों हो रहा है, हम लोग साथ रह रहे हैं। आप इसी को ले जाएं। आपके माता पिता भाइयों संबंध कैसे विकसित हो रहा है। आप अपने भाई से 2 साल मत मिलो, संबंध कमजोर हो जाएगा। आप अपने ग्रैंडफादर के साथ मत रहो, संबंध कमजोर हो जाएगा। तो क्या होता है, यह जो विवाह की संस्था है, यह एक सामाजिक संबंधों को बांधती है।
इतना अच्छा क्वेश्चन था, यू कैन आर्गू दिस क्वेश्चन। आप थोड़ा से, आपका सवाल नॉवल पे ठीक था, थोड़ा और अच्छा उसमें हो सकता था। जो आप बोला कि नॉवेल जो होते राइटिंग्स है, पर ये हमेशा राइटिंग किसी लक्ष्य से ही नहीं आती, लेकिन कोई ना कोई संदेश आता ही आता है। आप किसी किताब पढ़ो तो शायद आप ये कहते कि हर किताब में कोई ना कोई संदेश होता ही होता है, बिकॉज नो राइटर इज राइटिंग द एमलेस राइटिंग। कुछ ना कुछ संदेश होता ही होता है। समटाइम्स राइटर डजंट वांट टू गिव द मैसेज, देन आल्सो देयर इज अ मैसेज। ये रीडर के ऊपर है, इसमें आपके एनालिसिस पावर्स में आता है। जो ऑटोग्राफी के बारे में कहा था, ऑटोबायोग्राफी जो है वो बहुत ही एग्जॉर्टेड लिखी जाती है, उसमें कई बात बढ़ा चढ़ दी जाती है। ये ऑटोबायोग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है, वह उस कालखंड के बारे में, फॉर द पीरियड जहां लिखी जाती हैं, वहां पर वह अपनी बातों को कहती है। वी आर नो वन टू जज टू राइटर। या ये आपने कहाँ सीख लिया? अरे रीडर तो जज करेगा ही करेगा, उसका राइट है। आपने पैसा दिया 200 रुपया, आपने किताब पढ़ा, आप तो जज करोगे जरूर ना। फॉर ए जज डिसाइड्स टू रॉन्ग वर्किंग ऑफ द सोसाइटी करंट इशू, आपने हाँ इसमें करंट इश्यूज हैं, कंसर्न टू सोसाइटी है। अब बायस और आइडियोलॉजी पे आपने आंसर ठीक किया, दोनों चंचू का आपने आंसर दे दिया। कॉमन सिविल कोड बेटा और तैयार करो, हाँ ए बिट मोर तैयार करो, क्योंकि वी हैव आस्क्ड लॉट क्वेश्चन, आप उसमें थोड़ा सी दिक्कत कर रहे थे। फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फिर शौर ने फुल टॉस दिया था, आप छोड़ दी इसको। जहां आपके काम का सवाल में टाइम आप डिवोट करो, थोड़ा बोलो, एकदम सीधा सवाल था। कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टैट्यूट, सॉरी बोलने क्या पॉइंट था? लॉ के स्टूडेंट के लिए स्टैट्यूट क्यों नहीं बताओ मेरे को आप? भाई स्टैट्यूट क्या होता है बताओ मेरे को। सर स्टैट्यूट लॉ ही होता है। हाँ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं है? यस सर इट इज। तब फिर आपने छोड़ दिया इसको। अब हैबियस कॉर्पस में एडी नोलपुर केस, वो आप उल्टा बोल गए, क्यों ऐसा किया आपने? आपने क्यों नहीं पढ़ा उसको? यू रेड द बोथ केस ऑफ द धनंजय चंद्रचूड़ एंड हिज फादर, बोथ केस आप करा दिया। तो उसको ठीक करो ना यार, वो आएंगे ही उसमें पहनता होगा। तब कोई फायदा नहीं। तो आप दोनों केस पढ़ो, आप दोनों केस नहीं पढ़ा आपने। सॉरी ने इसको ठीक भी किया। फिर मिस्टेक, वैल्यू एडिशन इन जुडिशरी, आपने क्या बोला? फ्री फ्रॉम बायसेस, डिलीवर जस्टिस एट एनी कॉस्ट। मतलब आपने एलिगेशन लगा दिया जुडिशरी पे कि जुडिशरी के पास ये वैल्यू नहीं है। जस्ट ट्राई टू इंटरप्रेट योर आंसर। हिज क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल कि व्हाट वैल्यू एडिशन यू वांट टू गिव द जुडिशरी, ये सवाल था ना। आपने क्या किया कि फ्री फ्रॉम बायसेस, मतलब आप एडिशन कर रहे हो कि जुडिशरी बायसेस से फ्री हो और वह जस्टिस किसी कॉस्ट पे दे। मान लो हाईकोर्ट का जज सामने बैठा है, बोले तो हम ही को बैठ के गरिया रही लड़की है कि हम भी बायस हो गए हैं, हम ही नहीं उससे हैं। तो आप वैल्यू एडिशन बताओ ना, आप क्या करोगे? जस्ट टू प्रिपेयर दिस आंसर। रामायण का हो गया मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं लग गया। यू आर वेरी गुड कैंडिडेट एंड आई एम वेरी होप। यस सर। थैंक यू सर। एक तो बेटा माय फर्स्ट ऑब्जेक्शन इज इट्स वेरी डिफिकल्ट एट दिस स्टेज टू गेट रिड ऑफ दिस, बट ये तुम्हारी बातों में यू नो आता है, यू नो दैट इज, ट्राई नॉट टू से दैट फ्रेज। ओके सर। बेटा अदरवाइज बहुत सब अच्छा जा रहा है, तो ये आज एक बहुत बड़ा इरिटेंट है ये, दैट वी शुड नॉट यूज इट, ट्राई नॉट टू यूज दैट। बी वेरी जल्दी में बोलोगे जब, और जब बह जाओगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। तो बहना नहीं है, एवरी सेंटेंस कॉन्शियसली बोलना है, तो फिर नहीं निकलेगा, तब आप कर ले जाओगे। दूसरा उस क्वेश्चन पे और अच्छे से आप तैयारी करिए। सर ने जो पूछा था, हाउ कैन यू सर्व पीपल व्हेन ओनली a limited number of people are coming to your court for justice? How would you serve people? जस्टिस, जो जस्टिस होता है ना, दैट इज नॉट लिमिटेड टू द पार्टी। जस्टिस इज एन आइडिया दैट अपहोल्ड्स द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे बड़ी सर्विस है उसकी। Justice is a system that reposes the faith of Indians and society people into the constitution and the values. ये जंगल का राज नहीं है। That is the greatest service. A good judgment
has greatest benefits not only for the people involved but also for the society at large. Society at large, yes. Exactly. तो उस तरह का कुछ आंसर बनाइएगा. You are the best person to do that. सेकंड, हाँ मेरा भी, मैं सर ऑफ कोर्स जो है सर ने जो बता ही दिया है, लेकिन मुझे मेरे भी अपने रिजर्वेशंस हैं कि जज के लिए डू यू नॉट बिलीव दैट a good raw material for judge, the least he or she should have is independent mind. Do you agree? Yes, sir. It is this aspect that is getting eclipsed when you talk much about कि मेरे background का मेरे ऊपर बड़ा influence है पापा. That is the aspect I want you not to portray. कि तुम बहुत influenced हो किसी particular चीज से और अपना independent mind नहीं apply ज्यादा किया है. Independent mind का हमको वहां पर देना है कि it is my choice, sir, मेरा interest है. As I progressed into the study of law, I found that I'm feeling a kind of connection with this stream. And can I make this connection available for the service of the society? Then this option came to my mind. Yes, I should apply law and then try to make my bit of contribution to the society. That is all. And then I also had a positive feedback from my father who supported this idea. That served me well in deciding finally for it. So उसमें कुछ गलत नहीं है कि पापा ने किसका भी फीडबैक रहा कि कैसे करें, करियर चुनते हैं, डिस्कस तो करते ही हैं, तो बोलो कि उनका भी रहा कि यस दिस इज अ वेरी नोबल जॉब दैट यू हैव चोजन. और उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन के इंपॉर्टेंस को रिइंफोर्स किया अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से. जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन का जो इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसको भी उन्होंने पॉजिटिवली रिइंफोर्स किया. एंड देन there was no looking back, sir. I thought I will try my best to get into this. Simple. Keep it very simple as it is. Then कहीं पे तुम्हारे बेटा आ जा रहा है और ये सबकी अपनी हम सबकी अपब्रिंगिंग और सोसाइटी का इफेक्ट होता है. मोरालिटी बहुत ज्यादा आ जा रही है लॉ में तुम्हारे आंसर करते समय कई जगहों पे. मोरालिटी हैज नो प्लेस इन लॉ, in interview at least. Let it be in the jurisprudence section. In interview, while talking to law, morality does not have much place in law, if I understand. So मेरा limited experience जो रहा आप लोगों का इंटरव्यू लेके, आप ही लोगों से मैंने जो सीखा, उससे मुझे लगता है, और अनुज सर मुझे करेक्ट भी कर देंगे अगर कुछ दाहिने बाएं हो रहा, कि मोरालिटी को इस पर ऑलरेडी बहुत डिबेट हो चुका है. लॉ इज व्हाट इट इज. ओके, तो लिव इन रिलेशनशिप हुआ, ट्रांसजेंडर हुआ, सेम सेक्स मैरिज हुआ, इसमें आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू एंड ऑल द कैंडिडेट्स नॉट टू ब्रिंग इन द एलिमेंट ऑफ मोरालिटी मोर देन प्रोपोर्शनेट. बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत गड़बड़ फंसेंगे, फिर मुश्किल है निकलना उससे बाहर. क्योंकि the reality is that your depth and expanse of study is not of that level that you can handle all the facets when they come heavily upon you. तो इसलिए उसको टच करना थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, उससे सावधान रहिए. मोरालिटी वाला एंगल बोलिए मत, बोलिए ही मत, मैं तो कहता हूँ. ठीक है, और भी उसके रास्ते हैं आंसर करने के, मोरालिटी के अलावा भी. इसका नीड, फॉर एग्जाम्पल, कि सोसाइटी में इसका नीड ऐसे महसूस हो रहा है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये महसूस हो रहा है. मोरालिटी ना लाइए, एडवांस्ड नहीं है सोसाइटी अभी. सर नहीं, लेट्स से कि अगर उन्होंने सेम सेक्स मैरिज की बात की, तो अगर ये होगा कि अपोज क्यों हो रहा है, तो उसका वन ऑफ द रीजन है कि हमारी सोसाइटी उसके लिए भी तैयार नहीं है. ये ऐसा लोग कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी तैयार नहीं. यू आर नोबडी टू से दैट एज योर ओपिनियन. यही तो सारा फाइन पॉइंट है. Some corners, some sections of the society are raising a concern that Indian society is not ready. जब ये सब बोल चुके होंगे कि एक साइड ये कह रहा है, एक साइड ये कह रहा है, हम कुछ, यही तो जज का काम है. तुम अपना साइड कैसे ले रहे हो? सब बोल दो कि ये 2-3 कंसर्न इधर से है, 2-3 कंसर्न इधर से है. हाँ, तो आपका क्या इस पे टेक है? तब जब वो बोलेंगे, देन यू से कि this is such a serious and sincere matter that a free debate, a dialogue and a free debate should be there with all the stakeholders. As far as my opinion is concerned, the only way is to uphold the constitutional spirit, and judiciary's view on this aspects are this, to which I respectfully concur. एक बच्चा पीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहा है, वो खड़ा होकर जो वो इंडियन सोसाइटी के इतने बड़े चैलेंज को अपने प्राइवेट सोल्यूशन से ठीक कर देगा, ऐसा नहीं है. हम अभी आपकी वो मैच्योरिटी और डेप्थ नहीं है कि आप इतने बड़े क्वेश्चन का ऐसे जवाब दे देंगे. लेकिन यू शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन. झगड़ा किस बात पे हो रहा है, आपका क्या व्यू है, बोल दो कि मेरा वही, आई कंकर विद रिस्पेक्टफुली विद द व्यूज ऑफ द ऑनरेबल जुडिशरी. ऐसा ऐसा है. कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट भी कहती है कि राइट टू इक्वालिटी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. राइट टू चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस. हाउ मच टाइम इट विल टेक टू लीगलाइज, that is a subject matter, has to be decided by a free dialogue of all the stakeholders.
बट मेरा ओपिनियन है कि इट इज इन द राइट डायरेक्शन, तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे। ऐसे करना। Okay, sir. फिर है कि ऑल कैंडिडेट्स आर सेइंग द सेम थिंग, ये फुल टॉस होती है, इस पे छक्का मार दिया जाता है। इस पे बोलो कि देन सर, as a part of this process I am very glad to hear this, that my competitors are also sharing the same vision and the same values, and if I cannot make it to the list, at least there would be somebody else carrying the same values to serve the society. Finish it. उड़ा दो इस चीज को, दबा दो कि आप सब तो यही बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात। हम मैं होता है कैंडिडेट तो दूसरी तरह जवाब देता। आपके लिए मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी सोबर रिप्लाई कि सर, ऑल आई कैन से दैट आई स्टैंड बाय विद द वैल्यूज दैट आई हैव पॉइंटेड आउट, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू हियर दिस दैट अदर candidates are also sharing the same view. So if unfortunately I am not able to make it to the list, at least I know this, I have the consolation in my heart that there are people who will uphold the same values when they get into the service. That's how you play it. Okay. तो इस तरह का थोड़ा सा ना सोचो, तो वो मैं समझ रहा हूँ कि why this is not up to the mark। उसका कारण यह है कि you are too young for the depth and maturity that is required। तो वो it is natural, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपस्केल कर दो, बस अपस्केल थोड़ा सा, by way of thought only, थॉट थिंकिंग से। ये रीडिंग वूडिंग से नहीं आएगा, ये थिंकिंग से आता है। सोचते जाओ कि जैसे हम लोग अब जो सर जो बोल रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग जो बोल रहे हैं, इसको इको होने देना दिमाग में। एक आंसर अच्छा बताने से आपका बाकी आंसर थोड़ा अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन इसका सेंस ऑफ मेच्योरिटी और डेप्थ जब आप पकड़ लेंगे, तब आपको ये पता लग जाएगा कि नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और सोचती हूँ। बस वही हमको चाहिए। वी डोंट वांट, जैसे कहते हैं ना कि हम आपको मछली वॉट एवर, हम आपको अनाज नहीं देना चाहते हैं, आपको खेती करना सिखाना चाहते हैं। तो यू स्टार्ट सेंसिंग कि नहीं, ये मेरा आंसर थोड़ा मेच्योर है। बस अगर वो आ गया तो फिर यू आर थ्रू, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी मेरिट वाले जो क्वेश्चंस, जो मतलब जो टेक्निकल क्वेश्चंस वगैरह पे, आई डोंट थिंक यू शुड वरी अबाउट दैट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये होता रहता है, कोई बेसिक ब्लंडर्स नहीं होंगे, तो 100% यू विल बी इन द लिस्ट। एंड उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि बी थॉटफुल अबाउट इट बिफोर यू स्पीक। ज्यादातर तो यही सोच जाओ, और जो कुछ बचे वो 2-3 सेकंड में वहां जरूर सोच लेना। जल्दी मत करना बेटा, जल्दी मत करना, बस बाकी कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही। यू हैव वेरी वेरी गुड एंड वेरी, व्हाट शुड आई से, वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ योर पर्सोना। बस हम अंदर से अब हम जानते, क्योंकि 3 बार शायद हम तुम्हारा इंटरेक्शन कर चुके हैं, क्योंकि हम अब इसलिए 2 या 3 बार हम लोग इंटरेक्ट कर चुके हैं, इसलिए सर दूसरा मौका है मेरा। दूसरा मौका है। ओके, तो मैं अपने पर्सनल, एट द रिस्क ऑफ गोइंग रॉन्ग, आई कैन प्रिडिक्ट कि तुम सबसे छोटे हो घर में और सबसे जिद्दी हो, तुम सबसे ज्यादा रिजिड माइंड है तुम्हारा, सबसे जिद्दी मेंबर ऑफ द फैमिली तुम ही हो, इतना मैं गेस कर सकता हूँ। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, तो इसलिए बस मेरा डर सिर्फ इतना ही है कि वहां रिजिडिटी ऑफ माइंड कहीं भी पोर्ट्रे नहीं होने पावे। वुड यू लाइक टू चेंज योर स्टेटमेंट, कहा जाए कि वुड यू लाइक टू चेंज योर स्टेटमेंट, तो तुम्हें ये जवाब यस और नो में नहीं देने की जरूरत है। Sir, maybe I need more thought on that. Maybe I need to think over it. I do not find anything. I am not able to find anything wrong with my previous stand, sir. But this dimension that your good self has pointed out, that compels me to take time to think about it. I think I need more dimensions to think about. That's the answer. तो rigidity नहीं कि no sir, मैं firm हूँ अपने stand पे। हो सकता है आप सही हो, तो आप कंसीड भी मत कीजिए कि ना हाँ सर बदल जाए, वो भी गलत है। कि नहीं आप नहीं सर, सॉरी सर, नहीं कि सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू फाइंड फॉल्ट विद व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, बट दिस डायमेंशन हैज कंप्लीटली लेफ्ट मी इनटू थॉट, एंड आई थिंक आई नीड मोर मैच्योर थॉट बिफोर आई कैन आंसर दिस। सिंपल है, इसको और छोटा करो, इतना इतना बवाल भी बोलने की जरूरत नहीं, इतना मैं बोल रहा हूँ। बोलो कि सर दिस न्यू डायमेंशन आई नीड टू थिंक अबाउट। न हाँ कहा न ना किया, काम हो गया। They only wanted, are you trainable or not? Mind and parachute, they work only when they are open. तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। You are an excellent candidate. It has been a sheer pleasure having interacted with you. And Mother God will watch over you. Wherever you go, you will do excellent. बस कभी भी ego जो है वो उससे बचना, और rigidity of mind serves nobody. It is deleterious. Always याद रखना बेटा, बहुत काम आएगा। कभी ईगो और रिजिडिटी मत रखना। सर आपने लास्ट बार बोला था कि आई मूवमेंट ऊपर चला जा रहा था, तो आई हैव ट्राइड टू नॉट इवन वरीड अबाउट इट, क्योंकि मुझे लगता है जब फिजिकल होगा शायद तुम कंट्रोल कर ले जाओगे, लेकिन तभी कंट्रोल कर पाओगे जब अब सोच के जाओगे कि मुझे आंख ऊपर नहीं ले जानी है।
अगर ऐसे अभी उठ के चले जाओ तब गड़बड़ा जाएगा। सोच के जाना कि नहीं नहीं ले जाना है, आंख ऊपर नहीं ले जाना है, नहीं। एक बार दिमाग को दे दिया इंस्ट्रक्शन, फिर वो नहीं करेगा, तो यू कैन हैंडल इट। आई नहीं, मैंने घर में प्रैक्टिस किया है मॉक दे दे के, मतलब अपनी बहन के साथ या ऐसे, तो मैंने कोशिश की है कि You are मैं doing fine, I will say. I don't know because I joined late, but till since when I am observing you, I did not find it never distracted me. So I should have श्योर ये stepped ठीक aside. बोल श्योर ये ठीक बोल रही हैं। इनका आंख जो है 50 बार से ज्यादा ऊपर गया है। Okay, sir. और ये मैं अब नहीं बोलूंगा कि उस पर कुछ काम करें, जाने दो, ऐसे जाने दो। आप थोड़ा से कॉन्शियसली अपने को आप ध्यान रखना। अभी क्या है, आपको बहुत ज्यादा अगर हम चेंज करने को बोलेंगे तो आपके ऊपर दबाव आएगा। जस्ट एग्जाम जब हॉल में जाने के पहले याद करना कि हमको कहा गया आंख को आप कंसंट्रेट करो, वो करने की कोशिश करना। आपका मैंने पूरा मॉक फिर से देखा, ओनली टू टेक योर इंटरव्यू अगेन, एंड आई प्रूव्ड राइट व्हेन आई सीन योर मॉक एंड एनालाइज योर पर्सनालिटी। Nobody can catch you in the law. But when there is analysis part, you start stammering. आपका जो माइंड है स्टेमर करने लगता है, नॉट द वॉइस। एंड देन यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द आंसर। उसमें आप क्या करते हो, लॉ की तरफ फिर जाने लगते हो। If you remember, I'm keep saying I'm not interested in the provisions, the articles. I keep telling you because I don't want to divert your interview on the unnecessary ways जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं था। उस पर बेटा ध्यान देना। दूसरा, आप में जो एक छोटे शहर की लड़की की मानसिकता है वो बहुत ज्यादा हॉबी है। नथिंग रॉन्ग इन इट, सब में होता है, हम में भी रहा होगा, शहर में भी रहा होगा। हम लोगों ने बड़े शहरों में काम करके इम्प्रूव किया है। आप जो बहुत ही सोसाइटी के जो डॉगमेटिक मॉरल्स हैं उससे आप बहुत प्रभावित हो। जैसे आपने एक लाइन यूज की ना कि मैरिज इज फॉर द सेक्सुअल प्लेजर फॉर ए लीगलाइज्ड वे, ये बहुत ही छोटे शहरों की मानसिकता है। ये सही है या गलत है इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, सोसाइटी इससे मूव कर चुकी है। इफ यू कम इन टू बॉम्बे, गो दिल्ली, मेजॉरिटी आर नॉट फॉलोइंग दिस इशू। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अब सेम सेक्स मैरिज सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। हमारे आपके पास क्या रह गया है उसको अपोज करने के लिए? शोर ने एक्सप्लेन करी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अलाउ किया है तो क्या क्या ग्राउंड्स दिए हैं। सेकेंड, सोसाइटी के वैल्यूज को आप क्यों जज करते हो? सोसाइटी मैच्योर है या नहीं है आप कैसे कह सकते हो? एक बहुत बड़ी बात कही जाती है इंटरव्यू के लिए कि सोसाइटी अगर मैच्योर नहीं है तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द मैच्योरिटी? अगर आप एक जज होके सोसाइटी के मैच्योरिटी के बारे में ये ओपिनियन रखते हो कि सोसाइटी मैच्योर नहीं हो सकता है, हाउ कैन यू कैन डिलीवर द जस्टिस? जस्ट ट्राई टू सी वेरी स्मॉल इश्यूज ऑफ द पर्सनालिटी। आई ऑलवेज बिलीव कि no candidate is going to be disqualified from the interview on the basis of the material part कि आर्टिकल 32 क्या है, 226 क्या है, रेप क्या है, उससे नहीं होता है। वो बताना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं बताना चाहिए, बट द मेजर डिसीजन इज बीइंग टेकन ऑन द पर्सनालिटी पार्ट। उस पर्सनालिटी पार्ट को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपका कोई दोष नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी कोई गलती है। 3-4 क्वेश्चन आपने थोड़ा से जहां पे जैसे मैथोलॉजी पे, राम पे, सिस्टम पे, कल्चर पे, उस पे आप बिल्कुल ब्लैंक मत करो। नहीं बोलना है मत बोलो, ये मत बोलो साहब मुझे नहीं आता है। और आई टोटली एग्री विद श्योर, तुम्हारे सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल सिलेक्टेड, 100% सिलेक्टेड। You guys have again strengthened our belief that 2 mock is necessary. अपूर्वा का कितना हुआ था मार्क्स? और 7-8 किया होगा? यस सर कम से भावना का मॉक कितना होगा? 20-25 हुआ होगा सर, और ज्यादा होगा हमको तो लगता है सर। These 2 girls we have earmarked for the to top IAS. दोनों IAS टॉप नहीं कर पाई, एक की रैंक 68 आई, एक की 55 आई। उन दोनों ने मॉक दिया होगा 20 से 25 के आसपास। और भावना एक ऐसी, मैं कोट करता हूं उस लड़की की, उस लड़की ने हमारी और शौर की जिंदगी हराम कर दी थी। रोज शाम को उसका मैसेज आता, सर क्लास, सर क्लास, सर क्लास। आप क्लास न करो, रात में रोने लगती थी वो, मेरा आज क्लास नहीं हुआ। शी गॉट 55th रैंक बट शी डिजर्व टू टॉप IAS। उसने अपने लैंग्वेज पे काम किया, पेस पे काम किया, अपने रिकॉर्डिंग को खुद सुनती थी और हमको समझाती थी हमारे में कमी क्या है। कई बार सोच रहे थे तुम्हारे में कमी नहीं पड़ा, सर आप फिर से देखो कमी दिख रही मेरे को। लेकिन आप लोग क्या करते हो टाइम पर। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द पंक्चुअलिटी पार्ट। सौर अपनी मीटिंग में थे, पास समय नहीं था।
मैं ऑफिस छोड़ के आया, मेरी छुट्टी ली, आप लोगों के पास कोई काम नहीं होता है, ले आप 5 बजे नहीं आ पाते हो, क्यों नहीं आ पाते हो बताओ मेरे को? सर हम आ गए थे 5 बजे। 5:02 पे आए थे, मैंने टाइम चेक किया ना, 5:02 हुआ था, 5:02 हुआ था, तो 2 मिनट लेट हुए नहीं हुए सर बेटा, yes, लर्न करने की बात है ना। एनीवे इट्स ए गुड एक्सपीरियंस, आई टोटली एग्री विथ यू कि हमारा ये सौभाग्य है, हमने आपसे इंटरेक्शन किया और मुझे पूरी उम्मीद है आप सिलेक्ट होगे। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होगे, आप लाइफ बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे आप। तीन All the चीज best. है ना बेटा, तीन चीज यहाँ Yes, बोल दो हम लोगों को, हम लोगों को एज एन एल्डर ब्रदर या गुरु जो भी मानते हो, प्रॉमिस करके जाओ तीन चीज। एक कि जिद जिद में नहीं आऊंगी, बोलो इस चीज को कि मैं इंटरव्यू पैनल के सामने जिद नहीं करूंगी, बोलो इसको, कमिट करो। मैं इंटरव्यू पैनल के सामने जिद नहीं करूंगी। नंबर 1। नंबर 2, बोलने से पहले एक बार तो सोच लूंगी कि क्या बोलने जा रही हूँ। सर जो बोलने 1 से 2 3 का फॉर्मूला है, सर जो 1 2 3 का फॉर्मूला है इनके लिए बहुत जरूरी है। सर बहुत 1 2 3 वाले में सर एक्चुअली वो उसका एसेंस तो ये लोग सीख ही गए हैं, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे हैं कि उस 1 2 3 के गैप ये लोग गिनने लगेंगे एक्चुअली सर। हाँ ये मतलब ये नहीं है सर का मतलब है कि इतना गैप तो होना चाहिए, और उस गैप में आप सोच लीजिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, कहीं गड़बड़ा मत देना कि 1 2 3 गिनती गिन रहे हो और सेंटेंस फॉर्म ही नहीं हुआ, तब तक टाइम आ गया बोलने का। तो सेंटेंस फॉर्मेशन बिना सोचे नहीं बोलना है बेटा। नंबर 2, दो चीज ये, और तीसरी चीज इस चीज का तुम प्रॉमिस करो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे, असर्शंस जनरलाइजेशंस नहीं करेंगे कि ये ऐसा है वो वैसा है। यही जज का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नो प्रिजम्पशंस, नो प्रेजुडिसेस, नो पैशंस। ये तीनों चीज, तीनों पी नहीं होने चाहिए। प्रिजम्पशन नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई प्रेजुडिस नहीं। ये चीज नहीं होगा तो यू आर अ गुड, पास कर ले जाओगे, मेरा विश्वास है। थैंक यू सर। चलो ऐश्वर्य गौरव कम। ऐश्वर्य Good evening, sir. स्टार्ट ब्रो भाई, मनु सर। Sir, Ashwari, Yes, sir. please introduce yourself. So I am Aishwarya Gaurav, and I have pursued my BB LLB from Uttarakhand Technical University. I graduated in year 2010-20, sir. 2000, 2020, sir. and from that time you are preparing for the judiciary. Yes, sir. I am preparing for the Judicial Services examination. Okay. And what is your hobby? So my hobbies are listening music and traveling, sir. Listening music. Yes, sir. And what is your favorable subject in which you are more comfortable in the law? So although I have studied all the subjects, sir, but I found myself comfortable in law of torts and jurisprudence. So what is the difference between legal fiction and legal presumption? So legal fiction is something in which law generally gives a personality to anything which is not a living thing. But sir, in the second thing is legal presumption. Legal presumption is the presumption regarding a certain fact in which the law presumes whether this would have been happened or not, with the mind of a person who is normally prudent in anything. Can you give me any example so that I can able to understand both things, how these two things are different? So in jurisprudence, a company has been given a status of juristic person, which a company is not a person. A company does not have a mind to think. But in law, for the sake of convenience, we have given him the company a tag of a fictionary person, and which is a legal person. And so presumption explained as a presumption that is presume, shall presume, and conclusive proof. That is in evidence law.
No, I'm not talking about the kinds of presumption. I'm just talking about what is a presumption, legal presumption. So a legal presumption in which a court uh, presupposes a certain thing which need not to be proved or which need to be proved in a certain way. In a case of may presume, what the court presuppose. So court in case of may presume, court generally supposes the fact whether to exist or not to exist, but it is subjected to the contraventions that can be bring upon by the parties. Unless or until there is no evidence brings before the court, how court can presume as earliest as possible. So there are certain general facts which can be presumed by the court. For example, the course of a river or the map or territory or a plan regarding uh, anything, the court can presume it, which is in knowledge of almost all prudent men. So it is a presumption or it is just a judicial notice. So judicial notice is something which for which the court takes the notice of a certain fact, that this fact might this fact exists or this fact does not exist, and presumption is making up mind by the judge regarding this fact to be happened or had happened. And what is the difference between legal presumption and qiyas? So legal presumption is raised by the courts generally while dealing with the law aspect or while dealing with the proceeding, while the qiyas is analytical deductions which is followed in Muslim jurisprudence. No, is there any difference in essence of presumption or a qiyas? So presumption is generally raised from the facts which are occurring around us, and which the court take the presumption of it, while the qiyas is taken is a deduction of Quran, Hadith, and Sunnah. It's a So combined. it is also taken from a fact which is already written in a Quran. Yes, sir. So basically, it confirms its analogies in qiyas with Quran, Hadith, and Sunnah. So both are same things, are almost the same. So in judicial presumptions, we do not refer to a book or a certain thing as particular, but in a qiyas, we refer if Prophet would have been at this time, or he had applied the Quran, or he has applied his Hadith, he would have said the same thing. So this is the basic difference. Okay. The difference of authority. Okay. Tell me something about the corrective justice and how it is incorporated or enshrined in our constitution. So I may not be very sure about this corrective thing, but so corrective justice, so far as I can recall, is something in which the court has the power to review its own judgments or reconsider its own judgment and giving a better and suitable judgment. And it has been enshrined under Article 142 of Indian Constitution. Sir. And what is the reformative justice? Sorry, sir, I can't recall it. So corrective justice or reformative justice are both things. If you know about the corrective justice, you must know about the reformative justice. Yes, sir, I have heard about it, this term, reformative justice. But, sir, this would have a guess rather than a very perfect answer on this. Therefore, I restrain myself, and I'm saying I have limited knowledge on this topic. Okay. The provision relating to the reservation in a constitution. Yes, sir. Corrective justice or a distributive justice? So the provision of reservation is corrective justice as well as
distributive justice as well, because it tends to correct the societal notion about certain classes, and it also prescribes for giving equal access to the people who are unprivileged, and therefore it is distributive justice as well. What is the human trafficking? So, human trafficking generally means, in general terms, it is the sale and purchase of a person by depriving that person from their natural home, and then forcing them to enter either in some unlawful trades, or keeping themselves deprived of their rights which they had. Whether the kidnapping or abduction is a human trafficking? So, kidnapping and abductions are not human trafficking, but human trafficking can be the object of it, one of the objects of it, for which it can be done. Okay. What is last seen theory in Indian Evidence Act? And what is the relevance of this last seen theory? So, the last seen theory is the theory which provides that the person against whom the offense has been committed, or with whom the offense has been committed, was lastly seen with another person, and that person will be called by the court, and court can court can ask that person, that that person has been seen with you last time, so how you explain it, and the person went missing or offense committed with that person after he was seen with you, so court can explain with that person. So this is an indirect evidence, and this is not a direct evidence on it, and it is labeled as circumstantial evidences. So it is a substantive piece of evidence? Last seen No, theory? sir. No, sir. This is not substantive piece of evidence. Rather, it is an corroboration to the evidences which has been placed in before the court. Okay. And what is last opportunity doctrine in a tort? Sir, in case of contributory negligence, the last in doctrine is used. Last opportunity doctrine is used, and it says the court, while determining the contribution of negligence in two parties, the court will consider that which party had last resort to stop this accident or stop the negligence to happen. So what is the present situation and what is the current law regarding to contributory negligence? Whether this doctrine is applicable? So the contributory negligence doctrine is applicable in torts, sir, and currently No, it is applicable. last opportunity, which was propounded in a case of Davis versus Mann, is also present right now. Pardon, sir, I don't have knowledge regarding this. Okay. What is the doctrine of neighborhood? Pardon, sir. Neighborhood principles. So I'm not so sure about this answer. So Okay. I'm unable to give the answer. Wagon mount case. Yes, sir. Have you heard about the case? Wagon mount. Yes, sir. What was propounded in that case? So, wagon mount case deals with the fixation of damages in case of tort, and in this case, the test of reasonable foresight was propounded. That whenever a tort happens, the test of reasonable foresight will be preferred rather than the test of directness. And the test of directness, in which case it was evolved? So it was evolved in Ray Polymis case, sir. And now what is the present position? Which So, test is applicable in a case of remoteness of damages? So reasonable foresight is applicable
in comparison to the test of directness. So whether this concept is appropriate, what is your opinion? So, with regard to the mental element in the case, I think this case is a place above the doctrine of directness, and therefore it is more relevant in determining the damages. So in a criminal law, there is a rule. The effect must be direct. Why not in a case of tort? So, a criminal law generally fixes the liability of the person who is causing a certain effect, which is an offense categorized under the penal law. But sir, so far the tort is concerned, tort generally neglects the mental element in it, and therefore to punish a person who was negligent of a case and who has not committed a certain offense and which was not in hand of that particular person, and if that person cannot see a reasonable foresight, then anything which happened for consequence of his act which is directly causing some effect, then it is irrational uh, uh, to make the person obligated for the damages. What for rule in IPC? What for rule? Have you heard this? Uh, PUT, pardon sir, what for? pardon sir, I'm not able to recall it right now. So my one or two questions from Sir. my side. Tell me, what is the sovereignty, which is given in a preamble? Something. So, sovereignty generally stands for a government or the authority who is independent of taking his all internal as well as external decisions without any limitations on it or without any superior authority. That's all. Uh, yes, so far. What is the parameter of the justice? How we can know that there is a justice in our society? Because it is a very abstract concept. So is there any parameters by which we are able to understand there is a justice in our society? Sir, there has not been such parameters in our society to exactly determine what the justice is. But, sir, through the results or through the consequences, we can say that justice has been served. It is whether a person who has been a victim of an offense or victim of the act of certain person, he must get the redressal, and the person who is committing wrong No, should I'm get just punished. talking about, I am not talking about here the any victim or offenders, right? As Yes, a sir. common man, as a common people, how I can understand this fact, whether there is a justice prevail in our society by seeing the society? How? So, whenever something wrong has been committed in the society, the people have faith in the courts and the administration, and people believe that by recoursing to the judicial authorities, by recoursing to the judicial establishment, we can get redressal, and that's the evidence of uh, that's the presence of justice in our society, sir. Sure. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. Chitresh? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. I'm here, sir. yeah, take it. Yeah. Apologies in advance for if we feel any disturbance in car again. Good evening, Aishwarya. Good evening, sir. Aishwarya, what is the meaning of your name? So, Aishwarya means in Hindi uh, so fame. In English, it's fame and a good fame rather. Good fame. What is a good fame?
So, being famous for a good reason, and that's called Aishwarya. And what is it in Hindi? So, ऐश्वर्य means समस्त सुख सुविधाओं से जिसको और जिसका नाम सर सुप्रसिद्ध एक तरीके से कह सकते हैं सर इसको. Are you sure? Yes sir, सुप्रसिद्धि or fame, that is. Okay. So, do you want to be a judge so that you can be famous, so that you can earn fame? No sir, I don't want to be a judge for getting fame, sir. I want to become judge because sir, I want to serve the judicial system, and uh, I'm willing to serve the society judicially, sir. Will you be a good judge? Pardon, sir, your voice was breaking, sir, so I couldn't listen the whole question, sir. Will you be a good judge? So, definitely, sir, I will be a good judge. What makes you think so? So, because I have the qualities which a judicial magistrate or a judge must have. That is, I am unbiased, and I'm I'm a diligent person, and I have a sound knowledge of law, sir. Okay. Diligent person, sound knowledge of law, and unbiased. Okay. Suppose, take a hypothetical situation. So, You you went to some place near a beach with your family member, and suddenly a high tide comes and your family member floats away in that. He or she does not know how to swim. You know how to swim, you can swim to save him or her. But at the same time, you also see a 6-year-old girl also getting swimmed away by getting taken away by the tides, and she is also crying for help. Whom will you save? Your family member or the girl? firstly, I will try to. So I will try to save both of them, and in case it is not possible, then I will try to save the person who is more near to me, or the person whom I can save, be it my family member or be it that Okay. girl, sir. Okay, good. So, Aishwarya, Yes, Indian sir. judiciary, the number of pending cases has just crossed the mark of 50 crores, 50 million, that is 5 crores. Yes, sir. In such a scenario, how can you help Indian judiciary, or what should Indian judiciary do so that people's faith gets restored in it? Three, Uh, four bullet so, points. Indeed, sir. So the first thing that, as a suggestion, I will recommend, or as a judge, I will do, is limiting the adjournments, fixing the time limit, and following the time limit which has been inscribed by the law. Second thing will be, sir, out of the court settlements, that is lok adalats, and that is arbitration, conciliation, mediation thing. Third one, sir, I will try to dispose of the case, and by early as it is possible. I will not delay it because of my personal things, or because of some. Hello, hello. Yes, Aishwarya, please go ahead. Yes, sir. So sorry, sir. There was some technical issues from my side, sir. Hello. No issue, no issue. Please carry on. Am I audible right now, sir? Yes, you are audible, Aishwarya. Please carry on. Okay, sir. So, I'm again repeating this answer, sir. First,
first thing I will do is limiting the number First of you adjournments on my side. first you repeat the question. What was the question? Yes, sir. The question was ki there is a delay. There are some number of cases which are filing, which are pending in our courts, which are probably you give the statics of 5 crores, and how these cases can be disposed of, and how these cases can be, how this pendency can be dealt, sir. So, sir, and as a judge, how I will dispose them. So, No, can I I give did the not ask how will you dispose them. sir? So far as I can recall, sir, you started the question with the for suppose you are a judge or how, and then you change the question regarding that, okay, how it can be disposed of. So the question was how can we restore the faith of common man in Indian judiciary? Judiciary, yes, sir. Yes, so you were coming to your answer. 3-4 bullet points, please. Yes, sir. So the first point is, sir, the following the limits of adjournments and and limiting the number of adjournments and fixing. Second point is, sir, fixing the time limit for processes. Third one is, sir, out of court settlements, for example, lok adalats and Who can arbitration. fix the number of adjournments? So, Parliament or the state legislature, sir. Will the judiciary allow such a law to stand? If they make a Uh, law sir, limiting the number of adjournments, will the judiciary sir, allow such a law to exist? yes, sir. We have seen in cases of CPC that maximum 3 adjournments has been allowed by Code of Civil Procedure, sir. And certain time limits has been prescribed at different places, both in CRPC as well as in CPC. So this can be a way to the hearing the cases in expediency. Then why does the parliament not bring a law on this? So probably because of Parliament believes in judiciary and in judicial diligence, that judiciary will do certainly dispose of the cases through other means, sir, expediently. Okay. So when did you first entered in LLB? When did you start your LLB? So in 2015, sir. 2015, and this is 2023. So I think it's 7-8 years of legal journey for you in the field Yes. of law. So considering that, I feel that you must have observed Indian judiciary very closely in last 7-8 years. On a scale of 1 to 10, where will you rate Indian judiciary? So probably on 8 to 9, sir. 8 to 9. Yes, sir. Why? Because every system has its own issues, sir. Even the judiciary is facing certain issues like limited number of judges, sir, and lack of infrastructure in some case areas. So when these systems will be corrected, then I think judiciary will operate with its full strength and full caliber, sir. Okay. Thank you very much, Aishwarya. That will be all from my side. Over to you, Viren sir. Thanks. Om Prakash? जी ऐश्वर्य, Yes, sir. अभी आप अपने नाम का मीनिंग बता रहे थे। सुनते हैं कुछ ग्रहों का भी इस पे इफेक्ट होता है। आपके ऐश्वर्य पे किस ग्रह का इफेक्ट हो सकता है? सर सूर्य ग्रह का असर ज्यादा असर मुझे लगता है इस पे। और मैं तो सुनता हूँ कि वीनस जो है उसके वजह से ऐश्वर्य प्राप्त होता है व्यक्ति को।
कुछ सर एस्ट्रोलॉजी में है आपका? सर व्यक्तिगत लेवल पे सर मैंने मतलब जब भी किसी को इस तरीके से कंसल्ट किया है सर, किसी ज्योतिषाचार्य को, तो उन्होंने मेरे सूर्य प्रबल होने की बात कही है सर, तो इस वजह से मैंने ये बात की। ओके, तो आपका सूर्य प्रबल है तो आप तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे। सर जितना मैं समझता हूँ सर ज्योतिष विद्या को, तो आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपके कर्मों के हिसाब से भी आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, इसलिए आपको अपने कर्म पथ पे अडिग रहना ज्यादा जरूरी है, रेदर की सीइंग कि कौन सा ग्रह कहाँ पे स्थित है अभी। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आपके अभी स्टेटमेंट से कि जो होना है वो तो होगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता, तो उसमें कर्म क्या करेगा? सर शायद जो होना होगा जैसा होगा, हमारे कर्म भी हमें उसी दिशा में लेके जाएंगे सर। ओके, वेरी गुड। ऐश्वर्य, ये प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग सुना है कभी ये टर्म? सर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सर मैंने इसका जिक्र सुना है सर, इस शब्द का। क्यों क्यों ये प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की नेसेसिटी पड़ी, जरूरत क्या पड़ी? सर क्योंकि आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब से पहले सर दो लीडिंग केसेस थे, सज्जन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने ही इंटरप्रिटेट किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता है अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3। लेकिन सर गोलकनाथ के केस में इस चीज को अलग कर दिया गया कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर दोनों एक ही है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी लॉ कंसीडर किया जाता है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा सर कि जो हम आज ये लॉ की डेफिनेशन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉ होगा, वो पिछले जजमेंट्स को प्रभावी नहीं करेगा, बल्कि ये आज से ही, जब से ये रूलिंग आएगी तब से ही ओके, ये वेरी प्रभावी वेरी वेरी गुड ऐश्वर्य, बहुत अच्छा। ये शंकरी प्रसाद में किस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था? सर इन शंकरी प्रसाद केस, पार्डन सर मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। भाई देखिए, फंडामेंटल राइट में 5 केसेस का बंच है, शंकरी प्रसाद, सज्जन और गोलकनाथ, केशवानंद भारती, मीनार। तो आपको लगता है ना कि इसमें सब कुछ तैयार होना चाहिए? यस सर। तो आपको याद नहीं है किस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया? नहीं सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। गोलकनाथ के केस का क्या इम्पैक्ट पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के ओवरऑल इंटरप्रिटेशन पे? सर गोलकनाथ केस के बाद सर पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और उस अमेंडमेंट से सर पार्लियामेंट ने 13 सब क्लॉज 4 को ऐड किया, जिसमें ये बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एक्सप्रेसली लॉ नहीं है सर। और गोलकनाथ केस में सर ये भी कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, और सर तो ये असर पड़े थे सर इस केस से। अच्छा, ये तमाम केसेस में अमेंडमेंट की एक लिमिट, क्या अमेंडमेंट वर्ड अपने आप में तमाम लिमिट्स रखे हुए हैं? क्या है, किसी पॉपुलर जज साहब ने इसको इंटरप्रेट किया था, आई थिंक जस्टिस खन्ना, कुछ इंटरप्रिटेशन क्या था उसमें? सर आप अपनी बताइए। सर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की सारी पावर्स हैं और वो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है उसको वायलेट नहीं कर सकती है सर। आज की तारीख में ये कई बार बड़ा डिस्कशन का विषय रहता है कि संविधान पूरा बदलना हो तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आड़े आएगा। तो आपको यदि क्या सजेस्ट करेंगे, यदि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही नया लाना है, जैसे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस लाया जा रहा है उसी तरह, क्या सजेस्ट करेंगे? बीइंग ए ज्यूरिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर अगर पूरे संविधान को बदलने की आवश्यकता आती है
लेकिन सर लेकिन इसके लिए भी बेसिक स्ट्रक्चर को बाईपास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में द पीपल ऑफ इंडिया की वो सारी चीजें हैं जो इसको रेगुलेट करती हैं सर, जो चीजें हमें मिलनी ही मिलनी चाहिए। जैसे अगर आप नया संविधान लाके अगर आप सोशलिज्म को ही बदलना चाहते हैं तो इसकी परमिशन नहीं होनी चाहिए सर। नया संविधान लाएं, बेशक लाएं, पर वो इन सारे बेसिक एलिमेंट को जरूर कंटेन करे, क्योंकि ये फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया के लिए सर। एक्चुअली यस ये सर। बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट से सेकुलरिज्म वर्ड इंसर्ट किया गया था। यस और सर। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती है कि सेकुलरिज्म भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसे तो लिस्ट बढ़ती जाएगी और पार्लियामेंट तो बिल्कुल उससे बंधी ही रहेगी। तो क्या रेमेडी हो सकता है? पार्लियामेंट को लाभ बनाना है। यदि सोच ले पार्लियामेंट हम नहीं सुप्रीम कोर्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को मानेंगे तो क्या क्या वो लीगल दायरे में क्या कर सकती है? सर कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है सर, एज बीइंग वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और सर पार्लियामेंट के पास कोई कोई ऑप्शन नहीं है। पार्लियामेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सर पार्लियामेंट जैसा कि करती है कि हर सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट पार्लियामेंट को लगता है कि वो सूटेबल नहीं है सर फॉर इंडियन कंडीशंस, तो वो सर उसमें कुछ चेंजेस लाके उसको रीइंफोर्स करने की कोशिश करती है, या फिर उसको रीइंफोर्स करती है। तो सर पार्लियामेंट ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्लियामेंट को डायरेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में या फिर इसको नलीफाई करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए सर। कि अभी आप ये प्ली बार्गेनिंग अभी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात हो रही है। क्या प्ली बार्गेनिंग भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है? सर कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही है सर, क्योंकि सर इसमें भी जो विक्टिम होता है पर्सन, उस जो एक्यूज पर्सन होता है सर, वो कोर्ट में एप्लीकेशन डालता है कि मुझे प्ली बार्गेनिंग करनी है। और नहीं, लेकिन सर मैं आपसे प्रोसीजर नहीं पूछ रहा हूँ। आपके अपने ओपिनियन में क्या इसको आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कह सकते हैं? जी सर, मैं इसको कह सकता हूँ सर। और ये कहने का कारण सर ये है क्योंकि ये भी इविडेंसेस को देख के नहीं किया जाता है, एक ट्रायल में नहीं किया जाता है, और पार्टियों के बीच में आपस की बातचीत होती है, बस सजा देने का काम कोर्ट करती है। यानी कोर्ट का सुपरविजन बना रहता है। और जब जी कोर्ट सर। का सुपरविजन बना हुआ है तो फिर कैसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगी? सर क्योंकि कोर्ट की जो शक्ति होती है सर, वो सिर्फ सेटलमेंट के बाद उसको पास करने एज एन ऑर्डर के फॉर्म में और पनिशमेंट के फॉर्म में पास करने की होती है सर। आर्बिट्रेशन एक्ट के बारे में आप जानते हैं? यस सर, मैंने यहाँ आर्बिट्रेशन में ज्यूरिसडिक्शन कैसे क्रिएट होता है? सर जुरिस्डिक्शन म्यूचुअली एग्रीड बाय द पार्टीज होता है सर। और कहाँ जाते हैं, किस फोरम पे? सर पार्टीज अपने मर्जी से कोई भी आर्बिट्रेटर ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर वो नहीं कर पाते हैं सर तो इंडियन आर्बिट्रेशन काउंसिल है सर, वो आर्बिट्रेटर आपको प्रोवाइड करती है सर। ओके, कौन सा एक्ट है इंडिया में? सो द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 19 सॉरी सर, मैं ईयर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ओके, 1996। ओके, ठीक है, यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो ये अभी आप किस फील्ड में आप ज्यादा कंफर्ट फील कर सकते हैं? अभी मैं थोड़ा लेट में आया तो नहीं सुन पाया आपको। सो jurisprudence और tort सर, लॉ ऑफ tort। वेरी गुड। ये स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है? ये सर थ्योरी? सर
सर स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी सर हैरी मायने ने दी थी सर, जो कि हिस्टोरिकल स्कूल के थे। सर हैरी मायने ने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये कहा था कि पहले जो पार्टीज की जो पोजीशन होती थी इन लीगल सेंस, वो उसके स्टेटस से आती थी, यानी कि उसकी फैमिली से आती हो, उसकी सोसाइटी से आती हो। बट रेदर देन अब के समय में क्या हुआ कि एक शिफ्ट हुआ उस पार्टी के स्टेटस में, और वो स्टेटस कन्वर्ट हो गया सर कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी उसकी पर्सनल कैपेसिटी पे। तो ये फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, मेरी समझ से सर ये चीज कही थी उन्होंने। कौन सी स्कूल ज्यूरिस्ट को मेन सेंटर में रखती है? सर प्रोबेबली सर द आंसर वुड बी philosophical school. Yes sir. Yes sir. ओके, ग्रे का नाम सुना है, प्रोफेसर ग्रे? Yes sir. Gray. किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? सर मैं स्कूल का नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, ये केल्सन का ग्रैंड लॉ थ्योरी क्या है? सर केल्सन ने कहा था सर कि लॉ बेसिकली नॉर्म्स, लॉ जो है वो नॉर्म्स से मिलके बना हुआ है सर। तो केल्सन ने उसके बाद ये कहा था कि जो जितने भी लॉज हैं वो एक बेसिक लॉ से अपनी सारी पावर्स डिराइव करते हैं, और वो जो बेसिक लॉ है और जो जिससे सारे लॉ अपनी पावर डिराइव करते हैं वो ग्रैंड नॉर्म है। इंडिया में हम किसको मान सकते हैं ग्रैंड लॉ? सर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। ओके, वेरी वेल। एक थ्योरी और है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि सर किसी भी व्यक्ति के पास कोई राइट नहीं है, यदि कोई राइट उसका है तो अपनी ड्यूटी को फॉलो कर। ये किस स्कूल से और क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट? सर ये जो थ्योरी जो है कि नो पर्सन हैज एनी राइट बट ओनली ड्यूटी, ये कॉन्सेप्ट सर डुग्यूट ने दिया था, और वो सोशियोलॉजिकल स्कूल के ज्यूरिस्ट थे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। और सर यस, हाँ बताएं, क्या कह रहे हैं? सर और डुग्यूट ने ये बात इसलिए कही थी कि उनका मानना था कि सोसाइटी में अगर सब लोग अपनी ड्यूटीज को डिलीजेंटली फॉलो करेंगे तो फिर सोसाइटीज में किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस इन ऑर्डर नहीं होगा सर। ओके, ठीक है, ओझा सर देखें अब आगे। ओके, थैंक यू। शौर्य सर ऐश्वर्य ये बताइए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अच्छा ये इंग्लिश, इज हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट और नॉट? Sir, in administrative sense, High Court is subordinate to Supreme Court, and yes, sir. Okay. Is there any school of thought from our culture also, our ancient Indian culture also, in jurisprudence, or we have contributed nothing? No, sir. Nyaya Darshan by Kapil Muni is a leading theory, as well as we prefer, sir, Manu Smriti as a source of law, sir. That is source of law. What about jurisprudence as such? So, Yeah. jurisprudence is the analysis of law, sir. Name one school of thought from Indian context, or any rule of interpretation or something like that. So, in from Indian perspective, sir. Yes, from Indian side. Something must have existed if we have also evolved as a society and a legal system before the common law things and before the British system of administration of justice was imposed. Which kind of justice administration did we have, if any? So we were governed by Dharma Shastra, and morality has been given emphasis by the Indian judicial system, ancient Indian judicial system. Sir. And what is the status of morality from the Western perspective? How do they see it?
Are there conflicting views? Yes, sir, definitely. So there are certain schools like analytical schools which completely disregard the morality as a ground of law or as a source of law. But there are certain schools like historical school and sociological school which consider it necessary to have certain element of morality in the law. Is morality of intrinsic and extrinsic kind? Yes, sir. Morality can be inner morality and external morality. So, And how do they play out in the debate between the two schools? inner morality is all about the consciousness of a person, whether to do a certain thing or not to do certain thing, while external morality governs his a person's behavior with any other person. Okay. Do you think Constitution has the Indic ethos, or is it borrowed from cultures and countries and conventions which are alien to India? So our constitution is a mixed blend of our own culture as well as a blend of some good and positive things from different constitutions of the world, suitable as per the Indian circumstances. Okay. Have you followed the contemporary debate, intense debate that is going on, especially in the United States of America, about the right to abortion? Yes, sir. I have read about it in a news article, sir. All right. What are your views about it? Is it okay to give someone the permission to abort a child? So, in my opinion, sir, there are two rational views regarding this. The one view supports the right, giving the right of abortion to the mother herself, and the another view opposes it, rather to not give the mother right to abortion up to after a certain limit or up to a certain limit. But, sir, in my opinion, it should be given to the mother with certain limitations or implications as suitable in our society, sir. What what place do you see transgenders have had in our culture from ancient India till date? How they have been treated? So the concept of transgender and in our society, in our culture, has been completely different from what Western culture thinks about the transgenders. In our culture, sir, a massive respect has been given to the transgender persons by including them in our ceremonies, by making them part of our happiness as well as our sadness, sir. And even in our mythologies, there are certain instances in which they have been regarded and worshipped and has been regarded as sacred persons, sir. Very well. And what is the current legal protection afforded to them? So in our present legal scenario, the third gender or the transgender has been recognized as a third gender, sir. In case of National Legal Service Authority versus Union of India, they have been recognized and they have all the rights which a person from a normal gender can exercise, sir. Rather a male or female exercises, they have been given the same rights under the bracket of third gender, sir. All right. Why do you think the law of torts that is yet not properly developed in this country? Why? So, because I think the law of tort is not a codified law and it lacks certain certainties, except for the cases which has been well developed. For example, the case of negligence, nuisance, etc. But there are certain things which has not been properly developed. The second thing is the remedies has been provided in criminal law as well, in civil law as well. So people prefer to opt for civil remedies and criminal remedies rather than going for a tort.
Does poverty or does illiteracy have anything to do with this? Yes, sir, definitely, sir. So there are certain rights, such as sir, easement, and there are certain things like small damages. People are not aware that these rights exist and they can enforce it. Okay. There is some Sir, disturbance. can I make sir a little request, sir? My charging has been down, sir. Can I please plug in the charging? Yes, yes, yes. Do it It first. will just take 4 or 5 seconds, sir. So No problem. pardon, sir. No, no, that's fine. That's fine. Hmm. Tell me one thing. How do you propose this collegium system, the controversy that has been going on, and then NJAC being struck down? What is the midway out, according to you? So the collegial system has uh, protected the judiciary from sir, intervention of executive, and but so still it has certain issues like transparency and unreasoned selections or rejections. So rather, a better reform in collegial system is needed, and a midway path should be constructed with after taking the confidence of the judiciary. All right. Chika, you told that your hobby is listening to music. So, Which kind of music do you generally prefer? so I prefer ghazal, sir, or and Bollywood music, sir. Bollywood music also. Can you name any Bollywood song which actually is a ghazal, but it is still Yes, in a sir. Yes, sir. Some movie Sarfarosh, a ghazal was sung by late Jagjeet Singh ji, and that was होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है. all right. What is the second line? इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है. Fine, fine, very well. Do you think that increasing the proportion of representation of women in judiciary will serve judiciary as a whole in a better manner, and how? Sir, judicial services is a kind of service which is very ideal service in itself, and I don't think there will be certain impact from by adding women judges to the bench just for the sake of general gender equality sense. But sir, since it is a service which can be done by the male as well as the female, and their representation will lead the society in a sense of women empowerment, and that's the whole object of increasing the number of female judges. Okay. Is there currently a system of reservation somewhere for women in judiciary? Uh, yes, sir. The exam in which I am appearing, so there is a horizontal reservation of women up to 30% who are residing to the Uttar Pradesh itself. Sir. Reservation as an affirmative action, are you in favor of it? Yes, sir. Definitely, I am in favor of it. Okay, reservation as a whole, as a policy of the constitutional law, is it okay? Is it not against meritocracy? So I don't see it against the meritocracy, sir,
because the constitution and the rule of law is all about giving equal opportunities to equal persons in equal circumstances, sir. So reservation serves the cause of giving equal opportunities to people who are unrepresented and underprivileged, sir. Son of a judge or daughter of a judge should again get reservation while appearing for PCSJ? Sir, there is a limit of creamy layer. If it is applicable, the person is not eligible for it. But if the person is not in creamy layer, in my opinion, the creamy layer should be extended, but after consideration of all the statics and all the present available data, not in a way that just to impose against a particular person, that a son of a judge or son of a executive magistrate's son, but rather a whole data should be considered to affect large people. Have you heard about this issue in Karnataka, where they moved and shifted the Muslim community to EWS instead of the community as a minority or backward class? No, sir, I am not aware of this thing, sir. I will read about it, sir. Okay. In Uttar Pradesh, there is one issue going on. That will be the last question from my side. And time and again, it has been agitated that this is not proper, that while the trial is still not open and it has not begun, you are demolishing the houses and properties of the accused. That is not a kind of justice that this society can afford. So what's your view on that? So, my views are, sir, in middle, sir, of this, whether not so extreme that is supporting the demolitions and not completely against it, because it is doing as a deterrent thing for the accused persons. But since a trial is, the matter is sub judice, so there should be a procedure of there must be a prima facie case against the accused, and then the demolitions can be ordered, but not as a hurry. And mere naming of a person in an offense should not be the criteria of demolishing it. Fine, that will be all from my side. Thank you, sir. Yeah, Ashwar, how are you? I'm good, sir. How are you, sir? Yeah. You have said you want to become a judge because you want to serve the society. And you also use the word want to serve society judicially. Yes, sir. What does it mean? So, because, sir, the post for which I am appearing, or I am giving, I'm preparing is a judicial post, sir, and it has certain limitations that I cannot deal persons hand in hand, and I cannot go in one-on-one talk with the person and resolve their solutions. I can act judicially and then serve the justice within my limitations with regard to the law. What are your limitations with regard to the law? So I can serve the justice to the people who are in cases which are listed in my court, sir. Not beyond that. And out of the court, sir, through legal awareness camps which are organized by National Legal Service Authority under it. So these are the 2 or 3 ways in which I can serve, and rather these are the limitations. Can you take part in that camp? Yes, sir. I'm not so sure about it, sir, but in my college days, I have interacted with our district judge, sir, and he was in camp, legal awareness camp, sir. So I can say that will be a job of. You have only one limitation, that the cases listed in your court can be decided by you. Okay, sir. It's not a limitation. It's a procedure given to you to decide a case. Yes. Besides that, any other limitation you have to deliver justice? So it will be my personal limitations or limitation of my thoughts, my prejudices, and my opinion personally. That I will not have to reflect my own opinion in any case, and I will have to determine the case. Your opinion matters. Without having your opinion, how you can decide a case? You have to have your opinion. Yes, well, sir, you have to but write your opinion. Two parties are there. Both parties having their
different opinion, conflicting opinion, conflicting claims. So ultimately your opinion will prevail. So, If you do not have the opinion, then how will you decide the case? but sir, those opinions which are biased and which can be because I've not said the bias. I've not reached on the issue of biasness. yes, You sir. just said I should not have the opinion. You said this. I said you have to have opinion. Yes, sir. There is a conflict Sir. of viewpoint of the two parties who approach the court. If Sir. there is no conflict, they should not come to you. Indeed, sir. Indeed. So therefore, the opinion of yours will prevail. If you do not have the opinion, then how deliver the justice? Sure, sir. I will not say it, sir. Huh? I will not say it in interviews, sir, regarding this thing. What do you mean by the unbiased? Yes, sir. I will be unbiased, sir. Yes, sir. You said that a judge need to be unbiased. What is mean by unbiased? Then, he must not have a pre-consciousness or a pre-biasness regarding a party or regarding any matter in which has been listed in his court, sir. You want to say he should not have a preconceived notion for an issue. This is what to say. Yes, sir. You said the judge need to have a sound knowledge of law. What is the need of knowledge of law? You have just a basic knowledge of law. Because the two persons are appearing in front of you, they'll explain the case and law. Therefore, if you're not having very sound, I'm having the reservation on the sound knowledge of law, not the knowledge of law. There's no very sound of knowledge of law. You need to have sound knowledge of understanding society, the system. Can you explain this? I'm just trying to make a question from your own answer to understand more to you. You have very good knowledge of the law. I have no issue on that. So, Explain. So I completely agree with your opinion, sir. He just need not to have a sound knowledge of law, but rather he needs to have a sound knowledge of society, how people think or how people act, and how the law is influencing their life. And then your reasoning to become a judge is being diluted here. You said to become, why you want to become judge, the qualities which you are having. You have said 3 qualities: unbiased, diligent, and sound knowledge of law. Yes, sir. And one said you should not have the opinion. You have rectified your answer on the opinion, and again you are rectifying the answer the sound knowledge of law. Now you tell me, as per opinion, what qualities a judge should have? So judge should be a good. Just frame it easily. It's a very easy conversation. Yes, sir. You are doing very fine. Just I want to understand you more. Just tell me. So a judge should be a good listener, and he must be aware with the circumstances in the societal behavior, sir, and whatever happening in the society, sir. Circumstances of societal behavior. Yeah, yes, societal behavior and how society is, what is basically happening in the society, sir. Happening means the current affairs, current issues. Yes, sir. Okay. One more thing you said, limiting adjournment. Yes, sir. Who limit the adjournment? So the parliament or the legislature of the states. Under which provision? So they limit because some procedural laws are in concurrent list, sir. Can Parliament control the proceedings of the judiciary? No, sir. Then It's the adjournment is the proceeding of judiciary or not? yes, sir. Yes, sir. Then how Parliament can control this? So it will rather can be controlled by the High Court, Honorable High Court, sir. Controlled by the judiciary itself. Yes, sir. Your answer, you are trying to say that I have given the wrong answer at that time. It should be controlled by the judiciary itself, by High Court or Supreme Court. Yes, sir. By making a SOP. You want to say this? Yes, sir. You have said that for efficiency of judiciary or disposal of the case, out of court settlement is needed. Have you done any research on this? How many cases can be disposed of
by out of court settlement? Not research basically, but since the passing of Lok Adalat Act and the passing of They are very petty cases. Very petty. yes, sir, indeed, sir. If suppose you take out a bunch, I don't think it will be more than 10% of the total cases pending in the judiciary. So, okay, I accept for those 10% your argument. For rest of the 90%. So for rest of the, I did not say it. This is the sole way of combating the cases, sir. I rather said it as one of the methods, sir. So, sir, in one point I said, so feeling the so it can be said, or I can amend the answer by saying, sir, the more and more, sir, appointment of more judges can be one of the methods, sir. You have said that dispose of the cases early, not delayed. It means the judges are delaying the cases. They are not disposing of early. No, sir. But with the help of bench, with the help of bar also, the court try to, so court can try to putting less limitations or giving less extension to the cases, and then by putting some extra efforts, sir, the cases can be disposed of early in comparison to whatever happening. You said the judges. You said if I become judge, I will not take the personal. I will make sure that due to my personal things, cases should not be delayed in the disposing of. You said this. Remember? Yes, sir. What is it? What do you mean by this? So, I will attend the court with the punctuality within the time limits, and will try to make You mean to say that present judiciary is not doing this? No, sir. I didn't mean to say it. The present judiciary not doing it, but they are doing it, sir. And the judiciary is doing well, and judiciary is doing really good in disposing of the cases, sir. In disposal of the cases, sir. But sir, it can be improved, sir. No actions is that is perfect, sir. And there is a chance of improving whatever is happening, sir. You said there is a. I got a point. You said you have in the CPC that maximum 3 adjournment is allowed. Yes, sir. Majority cases are going beyond 3 adjournment. CPC is a law passed by the parliament. Yes or no? Yes, sir. Yeah. Therefore, it means the judges are not following the laws. They are not following the law. No, sir. But in the same provision, it has been said that if the judge consider it necessary to give any adjournment, apart from these three, the judge has the discretion to grant the grants. You have quoted the CPC. Yes, sir. So it means it will applicable only to civil cases. No, sir. I have quoted the criminal procedure as well. There are provisions of 60 days. Which section in criminal procedure? Sir, 167 clause 2, filing of charge sheet. Time limit has been there. So charge sheet is different and adjournment is different. Yes, sir. I said that providing less adjournment as well as giving time limits for certain proceedings, sir. So mere adjournment will not resolve this, sir. And time limits should be prescribed, and other methods should be given in preference first for early disposal of cases, sir. Can you distinguish between the Keshwan Bharti case and Minerva Mills case? So in Keswananda Bharti case, sir, in what terms, sir, in differentiation in this? Both cases are on the same issue, more or less, but there is some difference between these two. Have you read these two cases? Yes, sir. I have read them for the cases. Try to recall what is different in these two cases. So, Keswananda Bharti case, the preference, the amendments which has given preference to DPSP were upheld. But in Minerva Mill, the court comes to the conclusion that there must be a harmonious construction in between the fundamental right and the directive principle of state policy, sir.
I want the difference in these two cases. These two cases are the same issue. They are the basic structure doctrine. Yes, sir. What difference in these two? So, in case one, in the Bharti case, basic structure doctrine was propounded, and in Minerva Mill, it was also strengthened by the court, honorable court. Is strengthened or clarified? Clarified as well, sir. Strengthened and clarified as well. Better what is strengthened or clarification? So strengthening means making it more stricter and more in while the clarification means refining the doctrine or refining what has been said by the court. Thank you. Thanks a lot. You done very nice. Sorry, आप start करोगे? Sorry. जी सर, जी सर. There is some sense of hurriedness that is unnecessary. You should drop it. Yes, sir. Just go. I mean, go cool. There is no need to impress upon something in a given time frame or in a very short sentence. Okay, वो बहुत जल्दबाजी ना करिए आप कि इसी में कह दूंगा या ऐसा कह दूंगा. Rather you take time कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या यही उसके लिए बेस्ट सेंटेंस है. ये 3-4 सेकंड में काम हो जाता है. Yes, sir. Okay, so spell it out first and then speak. My advice to everybody and to you also particularly. Second, otherwise demeanor-wise, I am not much worried about you. You are good. You are pleasant to talk to. Your body language, your speech, that communicates. That's not an issue. Most of the things you can communicate very well. So for choice of words or framing of sentences, I will not bother you much. They are okay. They are very good. I'll say they are good. But I am somehow not very glad to see your, or maybe I need correction, but my understanding of Aishwarya is not fame. I believe it is something else. It is about affluence. It is about having the material pleasures and all. That is somehow what signifies Aishwarya, isn't it? It comes out from Ishwar as what we call as gifted or as blessed with things and material spiritual things as the God himself. Something like that must be the real meaning of Aishwarya. Aishwarya is the attribute of godliness. I think संस्कृत में अगर प्रत्यय लगाएंगे ईश्वर में तो ऐश्वर्य ही आता है. तो वो देख लीजिएगा. I mean, I'm not an expert, but you watch it. What is the meaning of the name? We cannot go wrong. Yes, sir. और जो है और ऐश्वर्य और गौरव दोनों ही नाम पे देख लीजिएगा तो वो अच्छा रहेगा. और आपके नाम को कनेक्ट किया जाएगा, हो सकता है कनेक्ट किया जाए. तो बी रेडी विद एन आंसर दैट जो है इसको मैं बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ या इस सेंस में देखता हूँ कि ऐश्वर्य हो लेकिन ऐसा नहीं हो जिससे जो है गौरव पर कोई असर पड़े. गौरव भी हो, गौरव को धूमिल कर देने वाला ऐश्वर्य हो, ऐसा नहीं चाहिए. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट यू कैन मेक अप फॉर योर डिफेंस. देन रिफॉर्मेटिव जस्टिस वाला आंसर पे थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड रहे हैं हम. अगर हम सही समझ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से आप उसको पहले ही बार में अच्छे से पिरो सकते थे. दैट्स माय ओपिनियन. रिजर्वेशन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सेम. आई थिंक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिए. सर ने जो पूछा सर भी अभी बताएंगे अपना व्यू. फिर प्लैनेट्स एंड एस्ट्रोलॉजी पे एक वो थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन जैसा वायरल वो क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन जैसा हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन जैसा हुआ. एंड दैट इज you see we started with this thing, sir, perhaps Jaiswal sir asked you ki which planet is because you understood your name itself incorrectly perhaps, that it denotes fame. That is why you associated with the sun god, and that is right. To that extent you are right, absolutely right. That sun is a luminary planet that is supposed to govern the field of fame. That is fine. बट पहली बात तो एक ये पॉइंट है कि फेम उस नाम का मतलब ही अगर फेम ना निकला तो फिर सारी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी सारा चीज. नंबर 1. नंबर 2, सूर्य प्रबल है. दैट इज नॉट द आंसर व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर. ही आस्क्ड हु डू यू थिंक व्हिच प्लैनेट गवर्न्स दिस फील्ड. सो आपका सूर्य प्रबल है इसका मतलब ये नहीं कि ऐश्वर्य इज गवर्न्ड बाय सूर्य. यू गॉट माय पॉइंट. ओके, सो दैट इट इज वीनस. It is Venus, Aishwarya, and material wealth and all these things, the jubilance, they are governed by Venus. But that's actually not your subject matter.
So the best way, my feedback is that you should have said, sorry sir, कि इसके बारे में sir मुझे ज़्यादा, or have you written it as your hobby or something and I missed out? So I'm Astrology is a hobby. like religious things. So Is astrology expressly mentioned somewhere as your hobby? no, sir. Then the best way out is कि sir, I do not have much understanding about this thing. You neither derogate astrology, nor exclaim it, nor glorify it. Just say, sir, I have very limited knowledge about it, and I will not be in a position to answer this. That's all. You do it there. And even otherwise, when you go to, when he, sir, came back to you about karma, that what is karma, then actually you were talking about this, the misunderstood karma. कि हमारे कर्म से ही हमारा भाग्य, ये वाले कर्म का बात नहीं है जो इस जन्म में कर रहे हो. अगर कर्मा थ्योरी पे you want to go, then karma theory is a very grand norm kind of thing. Okay, so that has nothing to do with the trivialized form of karma that we understand in daily life. That karma is different, prarabdha, sanchit, and that's an altogether different thing. So better say sorry about it. Because that's not where we want to take the panel. Always, I will insist you to, if इस direction में जाने लगे तो बहुत विनम्रता के साथ you say, sir, I do not have much thought into it, and sir, I will have to study much more than what I have done to answer this question. ऐसा कहके धीरे से निकल लीजिए. They are not the areas where you want to expose yourself before the panel. That's my view. क्योंकि इसमें हर पॉइंट पे दो व्यू हो सकता है. Why to go there? हर पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हो सकते हैं. Don't take the panel there. Okay? लेकिन जो आपने कहा वो इन प्रिंसिपल सही है. तो एस्ट्रोलॉजी हटा दीजिए. फिर अगर इस पर ऐसा कोई क्वेश्चन कर दे कि आप क्या मानते हैं भाई कि the likelihood is almost nil that this question will be asked. अगर पूछा भी है कि एस्ट्रोलॉजी आप प्लैनेट्स मानते हैं कि कर्म मानते हैं, तो फिर आप तब आप एक चॉइस अगर लेते हैं कि हमको सर मुझे लगता है कि जो है कर्म का अपना जो है वो महत्व है और कर्म से जो है भाग्य बदला जा सकता है, ईश्वर की कृपा से भाग्य बदला जा सकता है, यही हमारा संस्कृति रहा है. खत्म बात. जो जनरल बिलीफ है वो ले, आप अपना उसमें इंडिविजुअल को स्पेशल ओपिनियन देने की जरूरत नहीं. और इस फील्ड में तो पढ़ना ही नहीं है. एब्सोल्यूट नो. दिस इज एन एब्सोल्यूट नो. से सॉरी. ठीक है, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए. वैसे तो इस तरफ घूमने ही ना दीजिए. मेरा तो डिमोलिशन वाले पे यू मिस द कैच. The demolition UP government did. UP government never demolished on the pretext of them being accused. Even though they were accused coincidentally, but UP government still went on to demolish the properties because they were illegal constructions. So that is an entirely different law, municipal law, under which they were demolished. Yes, so just read it. This is very important. Okay. Then woman representation pe you should have been more positive and forthcoming about it. So पहले नेगेटिव से ना शुरू कीजिए. जैसे पूछा मैंने सवाल, आपका टेक्निकली आंसर इज करेक्ट, बट nobody asks these questions to know technical answers. They want your philosophy. They want to understand your perception, how you feel about the other gender. What is your sensitivity? That is what they are looking for. So start with this only. Yes, sir, it will be a wonderful and welcome addition that if representation of women is increased in judiciary, that will bring in a fresh perspective because they represent half of the population. So their perspective should not be brought into judiciary to enrich this institution. जिसका काम है इक्वालिटी पर जजमेंट देना, वही नहीं इक्वल है, तो which kind of symbolism does it convey? Isn't it? Yes, sir. So, sir, meritocracy has also its place, and a fine balance between meritocracy and representation that should be ensured, sir, and it will be a wonderful and welcome addition. That इसका कोई वो नहीं है. इसके बाद फाइनल पॉइंट्स में आप दो चार चीज बोल सकते हैं, लेकिन ये ब्रॉडर पिक्चर तो यही रहनी है दोस्त. यस, ये क्योंकि ये सवाल आपसे सिर्फ यही जानने के लिए पूछा गया है कि आपका ओरिएंटेशन क्या है वुमेन के लिए एज ए क्लास. तो उसमें वी डोंट हैव टू गिव एनी नेगेटिव पॉइंट्स. फिर है, अच्छा एक गलती हुई छोटी सी. इट इज अ वेरी माइनर मिस्टेक ऑफ एटिकेट, बट यू शुड नो बिकॉज यू आर अदरवाइज वेरी वेल कंडक्टिंग योरसेल्फ वेरी वेल. सो इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू. हाउ आर यू का जो जवाब है वो हाउ आर यू से नहीं खत्म होता है पैनल में. स्पेशली हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच सर. दैट्स इट. यू डोंट आस्क अगेन कि हाउ आर यू सर, आप कैसे हैं. ठीक है, वो इक्वल्स जैसा वहां नहीं करना है. वो एक रेवरेंशियल डिस्टेंस जिसको बोला जाता है, रेवरेंशियल डिस्टेंस है, तो वो मेंटेन रखनी है. कि समझिए कि किसी डेटी के सामने बैठे हुए हैं, किसी भगवान के सामने, देवता के सामने बैठे हैं, वो रेवरेंशियल डिस्टेंस होना चाहिए. तो उसमें हाउ आर यू नहीं पूछ सकते. दैट्स माय ओपिनियन. ओके, हल्का सा निकल गया था आपके मुंह से, वो दब गया, लेकिन मैंने उसे सुन लिया कि ये आपने बोला है, तो वो ना करिएगा. ठीक है. फिर है, आपने कहा कि जज शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी.
लेकिन जस्टिस का जो आइडियल कॉन्सेप्ट है वो तो आंख पे पट्टी का है, इट इज सपोज टू बी ब्लाइंड. So if it gets influenced by what is happening in the society, then that will reflect and seep in into the functioning of the judge also. How do you reconcile these things? इस पर सोच लीजिएगा. वैसे भी मुझे बहुत पावरफुल आंसर नहीं लगा कि जज होने के लिए साउंड नॉलेज नहीं चाहिए, बल्कि जो है वो व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी चाहिए. मैं बताऊं आपको, मेरा बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, एंड आई वांट टू बी हार्शली करेक्टेड बाय माय सीनियर्स एंड कलीग्स, बट आई थिंक दोनों ही जरूरी नहीं है जज होने के लिए. सेंस ऑफ बैलेंस और सेंस ऑफ इवेल्युएशन, दो चीजें होना चाहिए, क्योंकि यही दो चीज करना होता है. इवेल्युएशन ऑफ व्हाट इज कमिंग बिफोर यू, एंड आर यू एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस. मेरे हिसाब से यही समझ में आता है मुझे. ना देयर इज एन एब्सोल्यूट प्रिजम्पशन दैट द जज शुड बी अ लीगल थ्योरिस्ट और लीगल ल्यूमिनरी, नॉर इज देयर प्रिजम्पशन दैट द जज शुड बी ड्रिवन बाय सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स. इन फैक्ट दैट इज नॉट एडवाइजेबल. तो समझे आप बात? तो मेरे हिसाब से आप एक बार सोच लीजिए कि जज की सही में क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें कोई देयर इज नो शेम इन इट. रिवाइज योर आंसर व्हाइल यू स्टिल हैव टाइम. तो वही तीन चीज बोली जिसमें एब्सोल्युटली कॉन्फ्लिक्टिंग कोई क्वेश्चन ना पूछा जा सके कि हाँ ये तो चाहिए ही जज के लिए. इंडिपेंडेंट माइंड चाहिए, लॉ के एप्लीकेशन का अच्छा एक बेंट ऑफ माइंड चाहिए, बैलेंसिंग एक्ट आना चाहिए, जो है इवेल्युएशन ऑफ टेक्निकलिटीज और एविडेंस आना चाहिए. इवेल्युएशन गुड लिसनर ऑफ चित्रेश भाई, सर, वो गुड लिसनर, वो एब्सोल्युटली. वो इन्होंने पहले बोला नहीं, बाद में ओझा सर ने पूछा तो इन्होंने खुद ही बोला. वो बहुत ही अच्छा पॉइंट है यस कि आपको सुनते रहना है, बोलना है ही नहीं. यस. जब सब सुन लीजिए तो चुपचाप लिख के निकल जाइए. बोलने की जरूरत क्या है. सर प्लीज कंटिन्यू करिए, आप बोल रहे थे. तो एक ये हो गया, ठीक है. और जुडिशरी को कभी भी डू नॉट अटेम्प्ट टू डिफेंड जुडिशरी अगेंस्ट द वैलिड कंसर्न्स व्हिच आर एक्नॉलेज्ड. दे आर एक्नॉलेज कि हाँ भाई ये कमी है, ये गड़बड़ है, जिसकी वजह से आपने 10 में 8 नंबर दिया, तो फिर उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है. कोई ऐसा दुखा नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि जुडिशरी में कोई जो है सर, वो है सर ने बोला कि तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जाएंगे तभी एडजमेंट लोग टाइमली वो करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे. तो बोला सर कि आई विल ओनली ट्राई टू एड्रेस that at least I do not become the cause of those problems which are generally considered to be haunting or to be inflicting our honorable judiciary. At least I will make sure that on my individual level I am not a cause of concern. लेकिन ये नहीं कहना है कि नहीं नहीं सर वैसे तो नहीं हो रहा है ऐसा, इट इज डूइंग वेरी वेल, एंड वो सर नहीं कन्विंसिंग है. पलटिए ना, पासा को बहुत ज्यादा पलटिए ना. If you are cornered on something, then you deviate slightly. In principle, do not shed an idea which you should stand by. That is the definition of integrity. Integrity means standing by an idea in which you believe. Okay, तो अगर कोई आइडिया पे आप कन्विंस्ड है लॉजिकली, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लीजिंग समबडी डू नॉट डिविएट, इट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन. तो आप हल्के से अच्छे विनम्र शब्दों में बोल दीजिए कि सर बट देयर आर सम वैलिड कंसर्न्स दैट ये जो कुछ गैप्स हैं वो जुडिशरी को जो है वो फुली परफॉर्म करने से जो है रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं. दे आर ऑक्लूडिंग जुडिशरी टू परफॉर्म एज वेल एज इट इज एक्सपेक्टेड टू. तो आई विल मेक श्योर ऑन माई इंडिविजुअल लेवल दैट एटलीस्ट आई बिगिन विद माई सेल्फ, that I do not allow those imperfections and those problems to influence my working. That is a better answer rather than कि जैसे ही सामने वाला आपके पे चढ़ने पड़े तो आप बदलिए मत. मैं इसके थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ऐसा कोई इलीगल टाइप का स्टैंड तो आपने लिया नहीं है. और आप ऐसा क्यों नहीं कहते, जब ज्यादा हो जाए तो आप बोले कि सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम अ कैंडिडेट एस्पायरिंग फॉर दिस सर्विस, माय लिमिटेड एंड एक्सपीरियंस ऑफ जुडिशरी as it functions is limited, sir. So these are the perceptions with which I am appearing in the service. I am sure that I would have much more to learn as I grow. Many of the perceptions will need modulation and modification, rejection and acceptance. So उसमें क्या सर शर्म की बात है? अभी आपका क्या एक्सपोजर है जुडिशरी के एक्चुअल फंक्शनिंग का? Almost nothing, almost none, isn't it? तो बहुत रिजिड ना, जो आप एक्चुअली आप इंटरव्यू दे रहे हैं जुडिशरी के बारे में हियर से पे, लीगल लैंग्वेज में ही समझिए ना, हियर से एविडेंस पे ही तो दे रहे हो कि लोग ये बोला है, लोग ये लिखा है, यही तो है हियर से एविडेंस पे ना. एक्चुअल आप आई विटनेस तो है नहीं, हियर से है. तो लीगल लैंग्वेज में समझिए. तो आई विटनेस होने पे चीजें बदल जाती हैं. आप यू आर रेडी टू लर्न, बहुत सारे आपके जो परसेप्शंस हैं वो धुल जाएंगे, रिफाइन हो जाएंगे, एंड दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन. तो मुझे लगता है कि जो ये यू आर डूइंग वेरी वेल. ये 4-5 पॉइंट पे आप, मेरी ओर से मेरा सुझाव है कि आप थोड़ा सोचिए, बात जस्ट थिंक अबाउट इट.
बहुत ज्यादा Yes. वो नहीं करना है, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड थिंग्स शुड बी ऑल राइट. ओके, Thanks. ऑल द बेस्ट, यू विल डू वेरी वेल. Thank you, sir. ऐश्वर मोस्ट काफी चीजें सौरभ ने कह दी हैं. Sir. आपका डिमीनर ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात, बहुत अच्छा है. बॉडी लैंग्वेज अच्छी है. जो मुझे एप्रीहेंशन था वही हुआ. मैंने आपका पिछला इंटरव्यू देखा, आपका दूसरा इंटरव्यू है ना तो हमारे साथ. Yes, sir. तो हमने टाइम में आपको इन्वेस्ट किया समझने का लिए. जो आपका स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ है, आपकी जो लॉ की स्ट्रेंथ है इसमें कोई दो राय की बात नहीं है. लेकिन लॉ के बाद जब चीजें एनालिसिस पे आती हैं तो जैसे मैंने प्रज्ञा के बारे में कही, प्रज्ञा नाम है लड़की का. Yes. हाँ, जैसे मैंने प्रज्ञा की देखा वैसे ही आप में भी दिक्कतें आ रही थी. आप लोगों ने बहुत ब्लंडर किया हुआ, सारे एस्पायरेंट ने क्या किया हुआ है, आप लोगों ने सिर्फ अपना मौका देखा है. अगर आप लोग ये नियम बनाते कि शाम को 5 से 8 तक हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मॉक में बैठेंगे, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा. उससे बेहतर कोई दूसरी तैयारी इस समय हो ही नहीं सकती. बिकॉज द मेंटर्स आर डूइंग a lot hard work, they are putting a lot questions, they are trying to analyze a lot, but most of you have missed this opportunity. If you see the chat, I keep writing this. Most of the questions we asked to you has been asked to other aspirants, and in the feedback session the answer has been given. If you have followed this, then you have improved a lot. मैं बताता हूँ इस समय कुछ नहीं. सर एक प्रेयर थी सर, हमको मुझे अनुमति मांगनी पड़ रही है सर, वही आ गए हैं सर, तो आज्ञा दीजिएगा अच्छा, सर. हाँ 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 सर, हाँ जाओ. थैंक यू, थैंक यू. Sir. तो आप अगर इस बता रहे हैं कोई जरूरत नहीं थी किसी और तैयारी करने की. आप शाम को 5 से 8 9 बजे तक जो चलता है 4 घंटे की आप सुनते, बाकी आप सड़क पे साइकिल चलाओ, तैयारी हो जाती. आप देखिए इंटरव्यू का ट्रेंड चल रहा है, इसी चला के हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक आपसे वो मिस्टेक हुई, जो हो गया सो हो गया. अपना दोनों ये मॉक ऑफ पे सुनिएगा. हरीडनेस है, बात सही है. जो हरीडनेस क्यों कि आपको आता है, रीजन क्या आपको आता है. तो जब आता है तो उस समय आदमी को अपनी जल्दबाजी को कंट्रोल करना चाहिए कि ध्यान से चलो, धीरे से चलो. अब आपने हर एस्पायरेंट को अपने नाम का अर्थ तैयार करना चाहिए. ऐश्वर्य क्या है, एक तो ये लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, ज्यादातर लड़कियों का नाम होता है ज्यादातर. इसमें वेल्थ, सक्सेस, फेम तीनों है. आप 3-4 मिनट इंटरव्यू को इसी में टहला सकते थे, बढ़िया बोलते बताते. दूसरा, गॉडेस लक्ष्मी से इसका रिलेशनशिप है. तो अगर शायद कहते तो बेहतर अच्छा होता. वो आपसे छूट गया. जो सवाल एस्ट्रोलॉजी का था उसमें शॉर्ट ठीक बोला, आपको निकल जाना चाहिए था कि मेरा मतलब क्यों टाइप खराब कर देगा. आपकी हॉबी आप जानते भी नहीं हो. आपको टेनिस भी आवे, आपको बैडमिंटन भी आवे, आपको रनिंग भी आवे, आपको एस्ट्रोलॉजी भी आवे, आपको माउंटेनिंग भी, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है. एक आदमी हो आप मुझे नहीं आता है, खत्म करो उसको. जो Yes. वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन का सवाल का आंसर था, आपका आंसर वो ठीक नहीं था. आई थिंक योर आंसर नीड टू बी रेक्टिफाइड. आपने वुमेन्स रिजर्वेशन में महिलाओं के अगेंस्ट बात किया था. आप ध्यान देना सुन के, जस्ट 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 हाँ ध्यान देना उसको, ठीक हो. दूसरा, आपने एक मिस्टेक किया, जो रिजर्वेशन पे आपने फिर मिस्टेक कर दिया. जो क्रीमी लेयर है वो ओबीसी में, एससी एसटी में नहीं है. इफ यू लिसन क्वेश्चन केयरफुली, ही वाज नॉट कन्फाइंड टू ओनली द ओबीसी. He was talking the complete reservation policy. After you have given the right answer that affirmative action होना चाहिए, ये affirmative action है ही है. अगर आप याद तो प्रियदर्शनी ने आंसर बहुत अच्छा दिया था, इंटरव्यू बोर्ड में से लिखा भी था चैट पे. यू प्रॉब्ली यू मिस्ड इट. ये affirmative action है, उसने कहा. दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाला जो पार्ट है आप फिर से पढ़ो. आप ऐसा करो, कहते हैं अनुसर MP जैन की किताब से जो जस्टिस वाला पेज है वो आप उनको पोस्ट करके दे दो, ठीक है ना. वो आप दे दो, Yes. वो उसको पढ़ने, वो अब मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा. डिमोलिशन वाला इशू फिर बड़ा अच्छा इशू था. अगर आपने पिछला मॉक सुना होता, आंसर उसमें दिया गया था. जो शौर्य ने कहा है वो ऑलरेडी डिस्कस है. जिसे जज के बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप उसमें अब जज को क्या नीर क्षीर विवेक, वर्ड नीर क्षीर विवेक, कि जज को सच और झूठ के बीच फर्क करना आना चाहिए. इतना उसके पास विवेक होना चाहिए.
एक बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायरमेंट है, बात ठीक है। सोसाइटी के बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, ठीक, समाज जानना, एक जज को समाज जानना चाहिए, एक सच को राजनीति जाननी चाहिए, दर्शन जानना चाहिए। जज क्या है, जज का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका विवेक अच्छा होना चाहिए, नीरशील विवेक उसका होना चाहिए। और जो सोसाइटी के वाइड कंसर्न, बात सही है, उसको आप डिफर नहीं कर सकते, सोसाइटी कंसर्न है वो तो है ना, उसको आप कैसे कह सकते हो कि हम उससे हम मुंह मोड़ सकते हैं। बाकी मैंने बाकी बातें आपको बता ही दी हैं। गुड लिसनर आपने बाद में ऐड किया, वो बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया। लिमिटिंग और एडजस्टमेंट में मैंने आपको मैंने हिंट दे ही दिया डिस्कशन करते समय। आप केशवानंद भारती हो, एक लॉ के स्टूडेंट्स को शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, किशोर भारती, मिनरवा मिल्स, एडीएम जबलपुर, सब केस ना आता हो, थोड़ा से एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आप उसको पढ़ दीजिएगा। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड वाले में आपको बहुत ठीक नहीं बोला कि जुडिशरी में पार्लियामेंट आएगा, यही तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी आप बोला तो यू गॉट द पॉइंट। अब एक जो सबसे अच्छी लाइन थी आप मिस कर गए, शायद मिनरवा मिल्स की थी, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, याद करना इसको। और जो यह केशव भारती है केस है, वो 24, 25, 29 अमेंडमेंट और केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अगेंस्ट आया था, और इसमें आर्टिकल 25 भी क्वेश्चन में आया था, आर्टिकल 25 में भी क्वेश्चन जा सकता है। I think it's enough from my side. You are a very good candidate. I'm also expecting from you to be selected. Your language, you have control over the language. You have a very polite when you speak. You have no arrogance in the expression. Your dress is also fine. The way, if you are going the way you are presenting here, it's perfect. I'm wishing all the best to you, and I'm very hopeful about this selection. चित्रेश, कुछ कहना आपको? तो तीन चीजें हैं, बाकी तो आपने पीछे शौर्य सर ने बहुत अच्छा एग्जॉस्टिव सब कुछ कवर कर दिया है। और मेरे सवाल तो जो थे वो ओझा सर के सवालों में ही दोबारा पूरे कवर हो गए थे। जो उत्तर सब आपने मेरे सवाल पे दिए थे, आप उस पे अपने उत्तर देखिएगा, और फिर जब ओझा सर ने दोबारा आपसे वही सवाल पूछे हैं उन बातों पे जो आपने उत्तर की थी, सारा तो पूरा इंटरव्यू सर ने वहीं पे लिया। आपने बोला कि पावर एडजस्टमेंट की पार्लियामेंट से कर देंगे, सर ने उस पे आपको घेर लिया, हर क्या चीज पे है आप ना, फंसे हैं उसमें। चित्रेश, क्या थे इनके सवालों के आंसर ठीक नहीं थे, तो हाँ, मुझे लगा कि रादर देन टू टेक हिम अंदर प्लेन, इनको उसी पे ठीक कर देते हैं ना, नहीं क्योंकि नहीं, बिल्कुल लॉ, बिल्कुल, वो बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा रहा। क्योंकि लॉ में ये अनबिटेबल है, लॉ इनको आता है, लॉ में इशू नहीं है इनके। नहीं, लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज है, डिमीनर अच्छा है, बोल अच्छे से रहे हैं, काम कंपोज्ड है, सब कुछ है। आई थिंक यू विल शेव बिफोर यू गो। Yes, sir. बट और ये कॉलर का बटन लगा के फिर टाई लगाइएगा, Yes, sir. ठीक है, Thank you. बटन खुला नहीं छोड़ना है। दूसरा, एक वो आंसर आपने अच्छा दिया था कि जो मेरे नजदीक होगा मैं पहले उसको बचाऊंगा। दैट वाज अ गुड आंसर, स्ट्रीट स्मार्ट आंसर, क्योंकि वही लॉजिकली करना भी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था जहां पे आपने, पूजा सर ने पूछा कि शौर्य हाउ आर यू, ऐश्वर्या हाउ आर यू, आपने बोला यस सर हाउ आर यू, आई एम गुड हाउ आर यू। दैट इज नॉट अ नेवर अ लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल इंटरव्यू, प्लीज नेवर एवर डू दैट अगेन। सर Okay, थैंक sir. यू वेरी मच सर, आई एम डूइंग गुड, दैट्स इट। Yes, सर आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट। डोंट आस्क द इंटरव्यूअर हाउ आर यू। yes, sir. ओके, तो वो है। और देखो जो सर बोल रहे हैं ना, ओझा सर, अभी आई थिंक 3 4 दिन पहले हमने शांभवी का सर इंटरव्यू लिया था, उसमें उसने क्वालिटी बोली थी जज की गुड लिसनर। अगर आपने वो इंटरव्यू सुना होता तो शी वॉज प्रेज्ड बाय ईच एंड एवरीवन इन द पैनल जस्ट फॉर दैट वन आंसर। बाकी भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो तो स्पेशली बहुत अच्छा था। क्या है अगर ना आप, चित्रेश, चित्रेश है क्या, यहाँ पे मुद्दा ही सुस्त गवाह चुस्त की हालत है। आप देखो कि कभी भी चार, उसमें चार होते हैं इंटरव्यू में, एक होता है कैंडिडेट, बाकी कोई आता ही नहीं है।
अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी जिंदगी का इतना बड़ा अवसर है, ये दोबारा 2-3 साल बाद मिलेगा, जल्दी मिलने वाला नहीं है। इतना सर कैजुअल मजे अप्रोच, आज ही टाइम पे नहीं आए, हमने नहीं, छुट्टी वो लिया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यार। आप अगर बताएं, अगर ये कोई जरूरत नहीं थी, ये लोग सारा मॉक सुनते, सब तैयार हो जाता, सब तैयार हो सर जाता। आप खुद ही सोचिए कि ऑफिस से निकल करके मैं तो गाड़ी से रोज इंटरव्यू में छूट रहा हूँ, भागम दौड़ी भागी करते हुए। तो कोई, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप में काफी एंजॉयबल प्रोसेस है। आप ऐसे ही सुनिए चार लोगों को तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। यहाँ हम हर आदमी से इतना कुछ सीखते हैं। अनुज सर यहाँ बैठे बैठे इतना लॉ पढ़ा दिए हैं पिछले एक हफ्ते में। सही बात, आई एग्री इतना विद यू। इतना अनुज सर डीपली लॉ की चीजें बताते रहते हैं, ये डॉक्ट्रिन वो डॉक्ट्रिन, नई नई चीजें, गूढ़ रहस्य निकल के आते हैं। बहुत अच्छा रहता है, कई चीजें सीखते हैं हम सर से। तो आप, मैं फिर भी यही बोलूंगा, एक बार मैं, सर ने भी आपको बोला है, मैं फिर से बोलूंगा, 1 2 3 दिन बैठिए, जुड़िए और लोगों का इंटरव्यू देखिए। उससे आपको ये समझ में आएगा कि देखो ये भी वही गलती कर रहा है जो मैं कर रहा था। और जब आप बाहर से सुनते हैं ना, तब कई बार आपको खुद समझ में आ जाता है कि ये आंसर गलत लग रहा है यार। भले ही आप खुद उसे देते समय आपको लगेगा कि नहीं ये आंसर ठीक है, आप जज नहीं कर पाते हैं, एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है बाहर से देखने में। तो उस चीज का फायदा उठाइए। बाकी आपकी नॉलेज वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा करेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक और यू अपने नाम का मतलब यार अच्छे से एकदम देख लेना भाई। सर। ऐश्वर्य और समृद्धि जो है ना, ये साथ साथ चलने वाली चीजें हैं, तो अच्छे से देख लेना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। ओके सर, प्रणाम सर, गुड नाइट। प्रणाम सर। So, may I leave now, sir? हाँ प्लीज प्लीज। Yes, sir. Thank you so much. Thank you.